तो उतना लीटर पानी कितने मिनट में बॉईल होगा? माँ, हो नहीं रहा है। ट्राई करके देख लेते ना। पानी गरम कर ही दिया है तो तेरे दिल की मैं सुनूं, संग तेरे मैं भी गाऊं, पल में दिल खिल जाए अभी। मैगी मैगी मैगी, लव ऐसा ना होगा कभी। माँ, आपकी तो सारे आंसर्स 10 on 10 है। दिल की सुन ली जाए। आओ मैगी बनाएं। From Nestlé. ర్యాప్ కాంపిటీషన్ పத்தி అమ్మ కిட்ட சொன்னியா? ర్యాపా అడ ఉన్న నంబి ర్యాప్ పத்தி అమ్మ కిட்ட சொன்னா ర్యాప్ గేపు வேணாம்னு குட்டிடுவா கண்ணா. சரி அம்மா, சாப்பிட ஏதாவது இருக்கா? ఇదేనా మ్యాగీ ఇవ్వడో కలర్ఫుల్లా? Red color carrot, green in the bean, bowl full of color, taste வேற லெவல். புது புது கலர் யாருக்கு தான் பிடிக்காது? அது மேகி ஆனாலும் சரி, மியூசிக் ஆனாலும் சரி. புதிய மேகி வெஜ்ஜி மசாலா. உங்கள் ஃபேவரட் மேகி இப்போது கலர்ஃபுல்லான காய்கறிகளுடன் லைஃபை கொஞ்சம் கலர்ஃபுல் ஆக்கலாம். வாங்க மேகி சமைக்கலாம். From Nestlé. ऑसम मैगी. वेज आटा मैगी. आटा मैगी? तुम बताते नहीं तो पता नहीं चलता. ये ऑसम टेस्ट है 100% आटा, रंग बिरंगी सब्जियों और 20 मसालों से बनी वेज आटा मैगी का। आओ मैगी बनाएं। आज क्या स्पेशल रिव्यू करेंगे? मैगी पास्ता। अमेजिंग है. 100% सूजी से बना मैगी पास्ता. मैकरोनी में यमी चीजी सॉस का बर्स्ट, ट्विस्ट में चीज और टोमेटो का टैंगो, पेनी में मसालेदार सॉस का रश. एवरीडे कुछ स्पेशल हो जाए, आओ मैगी पास्ता बनाएं. From Nestlé. ये सही है ना? है ना? यार ये फिर तुम्हारा हॉट एंड स्वीट, ऐसा क्या है इसमें? जो दुनिया का सबसे कॉमन सेल्फी पोज मारे उसे समझाना मुश्किल है। मैगी हॉट एंड स्वीट टोमेटो चिली सॉस है। इट्स डिफरेंट। मैगी हॉट एंड स्वीट टोमेटो चिली सॉस. इट्स डिफरेंट. फ्रॉम नेस्ले पेश है मैगी मसाला अनियन पोहा। चुनिंदा चावल से बने पोहे, भुने प्याज, रोस्टेड पीनट्स और जायका खास मसालों का सब है इसमें। तो बस गरम पानी डालें, मिलाएं और सिर्फ 4 मिनट में तैयार मैगी मसाला अनियन पोहा। दिन की शुरुआत गर्मा गर्म डिलिशियस ब्रेकफास्ट के साथ। From Nestlé. पेश है मैगी घी तड़का उपमा। चुनिंदा भुनी सूजी, खुशबूदार कड़ी पत्ते, बारीक कटी सब्जियां और घी का मसालेदार तड़का सब है इसमें। तो बस गरम पानी डालें, मिलाएं और सिर्फ 4 मिनट में तैयार मैगी घी तड़का उपमा। दिन की शुरुआत गर्मा गर्म डिलिशियस ब्रेकफास्ट के साथ। From Nestlé. अरे, अपने कॉलेज फॉर्म को साइन नहीं किया? बेटा लेकिन मुंबई क्यों? यहाँ भी तो अच्छे कॉलेज में मिल रहा है सेम कोर्स, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस. या राइट. डैड, आपको तो पता है ना अभी कितना कुछ करना है मुझे. क्या क्या लेकिन डैड, ये मेरे लिए चलने का नहीं दौड़ने का टाइम है. तो आज से रोज 1 चम्मच नेस्कैफे, गर्म पानी, थोड़ा दूध और थोड़ी चीनी. अब जिस दौड़ में तुम उतरी हो उसमें फ्यूल तो लगेगा ना. स्ट्रॉन्ग है तेरी तरह. अच्छा बाबा, कहाँ पे साइन करना है? Nestlé. Good food, good life. How was Mr. Startup? घर गई थी उसके. घर गई थी? Just for coffee. The coffee he made. क्या सही थी? Really? Yeah. It wasn't regular coffee at all. Coffee, milk, sugar. Just right. He has skills in the kitchen, yeah. Okay. I think he could be the one. ये तो वही कॉफी है. Exactly the same. Nescafe all in one. यही है तेरी. The one. Oh. एक सैशे नेस्कैफे ऑल इन वन, 1 कप गर्म पानी और बन जाए कॉफी. परफेक्टली डन. Nestlé. Good food, good life. சரிம்மா, நான் அப்புறம் கூப்பிடுறேன். ஏய், உனக்காக பூ வாங்கியிருக்கேன். நான் சொன்னதுனால தானே. அந்த வெக்கேஷன் டிக்கெட்ஸ்
அதுவும் நீ தான் சொன்ன. எக்ஸாக்ட்லி. நான் சொல்லாம நீங்க ஏதாவது பண்ணிருக்கீங்களா? காஃபி. இப்போ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குல்ல? கண்டிப்பா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. சுவைங்க புதிய இம்ப்ரூவ்ட் நெஸ்கஃபே சன்ரைஸ். சிறந்த மனம், மேம்பட்ட சுவையுள்ள இது பதமாக வறுத்த காபி கொட்டைகளால் தயாரானது. உங்கள் இனிய சிறு செயல்களை போல. இன்னொரு கப். நான் சொல்லாமலே வா, ரொம்ப ஃபாஸ்டா கத்துக்கிறீங்க. नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। तू ना एक काम कर, अपने बॉस को नमस्कार कर। सिर्फ खड़ा खड़ा ताली बजाएगा, कुछ करके भी दिखाएगा। पड़ गई गुगली? क्रंच कर मंच के साथ। बाहर डिलीशियस कोटिंग, अंदर क्रंची वेफर और क्रीमी फिलिंग। ताली से खुलता है ताला, यूजुअली दोस्ती वाला। जिनको समझते तुम कम जो, उनमें ही होता है दम ब्रो। सब में है क्रंच, सबका ये मंच, तो करो थोड़ा चिल ब्रो। बॉस तो तुम सिर्फ अभी के लिए हो, तुमको रिप्लेस करेंगे हम ब्रो। मंच दिखा दे कॉन्फिडेंस का क्रंच। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। You know guys, ये मेरी पहली क्लास है आपके साथ। अकाउंट्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट होता है। Let's have a break guys. जोक्स असाइड, पहले बताओ ये किसने फेंका? लाइफ है, ब्रेक बनता है। From Nestlé। यार सालसा विदाउट पार्टनर थोड़ी ना होता है। नीड अ ब्रेक। Ina mina dika, डायटामेनिका, माका नाका नाका। लाइफ है, ब्रेक बनता है। From Nestlé। Come on, fast. One last bite. ये लो। हाँ? अरे क्या खिला रहे हो? रुको, मैं सेरिग्रो बना देती हूँ। कभी कभार खिला दिया तो क्या फर्क पड़ता है? पेट भर के तो खाए ना। फर्क क्यों नहीं पड़ता? खेल के आएगा तो उसके चेहरे पे दिख जाएगा, या इतनी एनर्जी होगी कि फिर खेलने निकल जाएगा। मेहनत करता नजर आएगा, या अपनी क्रिएटिविटी का कमाल दिखाएगा। काम में हाथ बटाएगा, या इंडिपेंडेंट होना चाहेगा। बदलते मौसम को देख पाएगा, या अपनी अच्छी सेहत से बचपन खुल के जी पाएगा। और ये फर्क तब नजर आएगा जब हम पोषण देने और पेट भरने में फर्क समझेंगे, क्योंकि बच्चों की मुट्ठी जितने पेट को भरना तो आसान है, पर पोषण भरना बहुत मुश्किल। सेरिग्रो, जिसके हर बोल में है फर्क। आयरन, इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के घने पोषण का। नेस्ले सेरिग्रो, पूरा पोषण, पूरी तसल्ली की शुरुआत। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। अरे मैं तो नैनग्रो ही भूल गई। विवान ले आओ प्लीज। मम्मी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो फिगर इट आउट बेटा, स्पेस में भी तो अंधेरा होता है। तुम रोज रोज इसका सरप्राइज टेस्ट क्यों लेती रहती हो? ताकि जब लाइफ इसका टेस्ट ले तो ये सरप्राइज ना हो जाए। मैं इसे हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार करना चाहती हूँ, और इसमें मेरे साथ है नैनग्रो, जिसमें है प्रोबायोटिक्स, DHA फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, वे प्रोटीन फॉर मसल्स एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू सपोर्ट ग्रोथ एंड इम्यून सिस्टम फंक्शन। ऑल ग्रो, ऑल पॉसिबिलिटीज की ओर। नैनग्रो फ्रॉम नेस्ले। टेंशन छोड़, इधर आ। इस बार ना मैथ्स में फुल मार्क्स नहीं आए। पता है तो एफर्ट के तो फुल मार्क्स ही बनते हैं। आओ देखें क्या क्या बनता है मिल्क मेड से। पाएं 100 से भी ज्यादा रेसिपीज milkmaid.in पर। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। पापा कपकेक्स लाना भूल गए। अब तो सारी दुकानें भी बंद हो गए। चलो खोल देते हैं दुकान। चल चल, कैच।
और पापा भूल गए थे। आओ देखें क्या क्या बनता है मिल्क मेड से। पाएं 100 से भी ज्यादा रेसिपीज milkmaid.in पर। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। प्रोटीन चुनते हुए सबसे पहले पूछो इस प्रोटीन का माइलेज कितना है, यानी आप प्रोटीन पीते कितना हो और आपकी बॉडी पाती कितना है। पीजे नेस्ले रिसोर्स हाई प्रोटीन, जिसमें है 78% वे प्रोटीन, जो बाकी प्रोटीन के मुकाबले ज्यादा अब्सॉर्ब होता है, यानी इससे मिलता है हायर प्रोटीन माइलेज। नेस्ले रिसोर्स हाई प्रोटीन विद वे प्रोटीन। Dear members of Nestlé Parivar, good morning and welcome to the 63rd Annual General Meeting of Nestlé India Limited through video conferencing or other audio-visual facility. For the smooth conduct of the meeting, members will be in the mute mode. For members who have pre-registered to speak at the AGM, the audio and video will be open when the chairman requests them to speak. Please note, as per the requirements, the proceedings of the annual general meeting will be recorded and available on the company website. Without any delay, I hand it over to Mr. Suresh Narayanan, Chairman and Managing Director of Nestlé India Limited. Thank you, Inba. Namaste, dear members. It is my privilege to welcome you to the 63rd Annual General Meeting being conducted through video conferencing facility. This is my 7th AGM as the Chairman and Managing Director and the 3rd virtual AGM of the company. To begin with, I hope that all of you and your families are keeping well and safe, and we are hopefully coming out of this pandemic. Though I miss the privilege and pleasure of meeting you in person, the virtual AGM is a progressive step as it allows members, irrespective of where they are physically present anywhere in India or even abroad, to participate in the annual general meeting. Lots of planning and efforts have gone behind the virtual AGM of the company today with the objective that your participation is smooth. Although COVID-19 pandemic seems to be waning down, it is advised that we follow the safety protocol. While myself, all executive directors, company secretary and company officials are participating from our office at Gurgaon, all our independent directors are participating from their residence or other outside location. If there is any disturbance in the AGM due to this, I seek your liberty in advance due to the unavoidable situation. Let me now introduce the illustrious board members on the screen. Ms. Rama Bijapurkar, Independent Non-Executive Director, Chairperson of the Stakeholder Relationship Committee and member of the Corporate Social Responsibility Committee. She is participating from Mumbai. This would be her last annual general meeting as she is not standing for re-election and retiring at the end of her tenure on 30th April. On behalf of the board and myself, I wish to record and place on record our sincere gratitude for her very valuable contributions, wisdom and direction to your company as an independent director from 2017 to 2022. Mr. P.R. Ramesh, Independent Non-Executive Director and Chairman of the Audit Committee and member of the Nomination and Remuneration Committee and the Risk Management Committee. He is participating from Secunderabad. Mr. Rajyavardhan Kanoria, Independent Non-Executive Director, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee and member of the Audit Committee and Stakeholders Relationship Committee. He is participating from Delhi. Mr. Matthias Lona, Executive Director Technical and Permanent Invitee to the Corporate Social Responsibility Committee, participating from Gurugram. Dr. Swati Piramal, Independent Non-Executive Director, Chairperson of the Corporate Social Responsibility Committee. She is participating from the United States of America. It is now a little past midnight in the US, and I greatly appreciate Dr. Piramal
for joining at this hour and giving the AGM its due importance. Ms. Rupa Kudwa, Independent Non-Executive Director, member of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Management Committee. She is participating from Mumbai. Due to her other increased professional responsibilities, she has stepped down from the Board of Directors effective from 31st May 2022. So this too would be her last annual general meeting. On behalf of the board and myself, wish to record our sincere gratitude for Ms. Kudwa's valuable contributions, wisdom and direction to your company as an independent director from 2019 to 2022. Mr. David McDaniel, Executive Director, Finance and Control and CFO, member of the Corporate Social Responsibility Committee, Stakeholder Relationship Committee and the Risk Management Committee. He is participating from Gurugram. Finally, I have the privilege of introducing Mr. B. Murali, General Counsel and Company Secretary. He is participating from Gurgaon. Today is also a red letter day for Murali. The company has grown to its size and existence because of the dedication, the hard work, the wisdom, the ethics, and the contribution of all employees, be they men or women. Mr. Murali today has the distinction of participating in the 25th AGM that he would be participating as the company secretary. So 25 AGMs, Mr. Murali has been steadfast with the company. And in times when we were personally meeting, not so long ago, he used to be, along with Mr. Rajendra Agarwal, Mr. Pramod Rai, Mr. Gunjan Arya, and a few others, the pivot of these meetings. Mr. Murali will also be retiring from the services of the company this year, and therefore it is my privilege to record my sincere gratitude for all the wisdom and for all the standards that he has set for this company in maintaining the high standards of governance that we have come to be known for. So thank you, Murali, for all that you have done for the company. The company secretary has advised me that the quorum as required under law is fulfilled and I declared the meeting as validly convened. I also formally acknowledge the participation of the partners and authorized representatives of the statutory auditors, the cost auditors, and secretarial auditors. The statutory registers required to be there during the AGM are available for inspection on the NSDL website under the tab AGM Documents. The board report for company's performance during 2021 is already available with you in the annual report. Before I present my thoughts on the year gone by, please allow me to share this quote that seems so relevant to the times we are in. Mahatma Gandhi, the father of our nation, once said, "Carefully watch your thoughts, for they become your words. Manage and watch your words, for they will become your actions. Consider and judge your actions, for they have become your habits. Acknowledge and watch your habits, for they shall become your values. Understand and embrace your values, for they become your destiny." 2021 was a very dynamic year, and I think it is important to reflect on what intrinsic strengths your company has and look ahead with hope and a lot of pride at what has been achieved over this period of time. Your company is committed towards being a force for good as we move together towards a journey focused on our culture and purpose, environmental sustainability, societal and people initiatives, while enhancing our footprint and evolving with the times. Allow me to touch upon a few themes that have made this happen. Culture and purpose in action. Your company in Sanand factory in Gujarat is now fully operational and striving for the highest standards in sustainable operations as well as diversity and inclusion. The factory was built entirely during the pandemic period. It is a tribute to the dedication, ingenuity, commitment, and tenacity of all the colleagues and partners for whom impossible was not a word. Sanand factory is a gem, a Navratna as we call it, because it is your company's most digitally and environmentally advanced factory. It is equipped with state-of-the-art biomass boilers, helping in reducing the carbon emissions through cleaner fuel and hybrid power. This factory will also be your company's first
fully digitally integrated unit with complete digital manufacturing operations. Strengthening your company's commitment to diversity, your factory will have a separate social building block for female employees and a dedicated parking area for expecting mothers along with a creche. The facility is also equipped with ramps to ensure ease of mobility for specially abled people. Relationships, partnerships, trust, dignity, and respect are at the center of the Nestle business framework. Your company treats all trade partners with respect and fairness. Your company takes steps to support not just employees but also its partners. Your company engages with thousands of frontline people who work as distributor salesmen, loaders, and merchandisers, and their safety and well being is of paramount importance. Your company has stepped up efforts in this hour of need and has taken numerous steps to support stakeholders like a family. Your company was like a banyan tree for over 4,000 suppliers, many of whose businesses depended on the Nestle India ecosystem. Your company supports an increasing number of suppliers for their working capital needs while working closely along with them across the value chain. Your company also helps suppliers who needed support to get permission to operate and help them in starting up their operations during the pandemic while training them in COVID protocols. Your company also conducted training and organized mask distribution to drivers who transport your company's products. The second theme I wish to touch upon is environmental sustainability. Protecting and preserving the planet is part of your company's values. Within factories, there are continuous efforts to improve operational efficiencies, minimizing consumption of natural resources and reducing water, energy, and CO2 emissions while maximizing production volumes. Your company has accelerated its sustainability journey by working across 4 focused areas relating to climate, packaging, sourcing, and water. Your company collected and managed 23,600 metric tons of plastic, and all the brands of your company are plastic neutral. Your company has reduced the use of plastic in packaging by 8.6% since 2018. Your company has taken a pioneering status of eliminating 30 million plastic straws annually and has replaced those with paper straws that are responsibly sourced for its ready-to-drink portfolio, and this journey has started with the Nescafe range of cold coffees and Milo RTD. This year marks the 10th year of the Nescafe plan. During these 10 years, your company has engaged with more than 4,400 coffee farmers, 2,400 of them being certified 4C, in 251 villages across Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. I'm very heartened by the positive and sustained change in the livelihoods of coffee farmers and their families that the Nescafe plan has brought. The plan has also made an impactful contribution in reducing water usage at farms by 23%, while resulting in an increase in yield by up to 18%. Such visible change through constructive and respectful partnerships with coffee farmers gives your company even greater inspiration to extend this initiative to other farm interventions across India. As far as spices are concerned, your company is one of the biggest users of spices in this country. Maggie's legacy of almost 4 decades rests on the rich aroma of the tastemaker and how it became a must-have in the kitchen across households. Your company launched the Maggie Spice Plan that ensures sustainable sourcing of spices by working on 3 aspects: planet, people, and profits for the farmers. The Spice Plan today ensures traceability, which is important to establish that the spices are free from harmful pesticides and additives and is touching the lives of almost 1,300 farmers every year, spread across 39 villages in 7 states. The third theme I would like to touch upon is societal initiatives. It has been 2 years since COVID-19 has transformed our lives. The pandemic has redefined compassion, empathy, values of families, organizations, and people.
Your company rose to the challenge of the current pandemic by continuing the fight against COVID-19. In moments of crisis, our strong values and purpose ensures that we never lose sight of being a force for good. Your company's initiatives includes contribution of 4.4 million cooked meals and 124,500 grocery kits since the pandemic began. Further, your company has set up oxygen plants across 5 locations as part of COVID relief. Your company also provided healthcare equipment, PPE, masks, oximeters, face shields, gloves, sanitizers, and more. Through these relief efforts, your company has reached out to the people across 28 states and 6 union territories. Your company is focused on serving society and has been working towards building a healthier tomorrow, positively impacting the lives of the beneficiaries. Your company's flagship societal initiative, Nestlé Healthy Kids program, in partnership with Magic Bus India Foundation, expanded to Leh this year, reaching out to 650 beneficiaries. The Nestlé Healthy Kids program has benefited nearly 445,000 young adults across 23 states and union territories over the last decade. Your company's Project Jagriti initiative has positively impacted the lives of over 8.4 million beneficiaries over the last 5 years across 8 states and union territories. As part of the vision of strengthening community-led rural development for positively impacting the lives of people, Project Vriddhi, in collaboration with the SM Sehgal Foundation, has touched the lives of 1,500 beneficiaries. In its second phase, the program is benefiting around 1,300 people through the adoption of 2 more villages. Your company's Clean Drinking Water project has supported 150,000 students with safe water consumed. Your company has also empowered education for nearly 240,000 girl students through the provision of adequate sanitation facilities in schools. Your company's Project Serve Safe Food initiative has enabled and empowered 25,900 street vendors across 19 states through training interventions, through food quality and safety. I now come to the people initiatives. After a successful launch of Nesternships in 2020, your company rolled out Nesternships 2.0, focusing on upskilling 1,000 interns to help them thrive in workplaces. Your company recently also launched Nesternship 3.0 and has started onboarding the selected interns. Further, the NestVidya initiative enabled learning anytime, anywhere for our field force. Increasing diversity as a theme at your company is a leadership imperative and not tokenism of a superficial kind. About 24% of the workforce of your company are now women. Your company has moved a fair degree on this. In 2021, 43% of all the recruitment that were done within the company were women candidates, and it is a trend your company plans to continue this year as well. It is a matter of great pride for your company that about 70% of the factory workforce in the Sanand factory are women. Your company intensified focus on well-being, increased mental health coverage for employees, provided vaccination support, and stood by the families of colleagues who unfortunately succumbed to the pandemic. Expanding our footprint and evolving with the times. To better penetrate the market, your company, through the granular cluster-based approach, powered by data and technology, deepened its engagement into newer towns and villages. Your company progressed firmly and resolutely on its rural journey that was accelerated further by using a healthy mix of customized portfolio and building deeper consumer connect. Your company set out firmly and resolutely on its rural journey by using a healthy mix of a customized portfolio, direct distribution, and enhanced distribution infrastructure, deployment of resources, regional and localized communication, enhanced visibility, participation in village hearts, and building consumer connect. Through Project Rural, your company reached out to small towns with population less than 100,000 and large villages with population greater than 2,000 that offer long-term growth opportunities. Your company delivered strong rural growth performance in addition to sustained growth in smaller town classes and urban agglomerates. Digitalization is a growth accelerator for your company and will continue to be so in the future.
Leveraging the power of data and analytics is your company's business strategy. It has a multi-intelligent data analytics system that sources internal and external data to converge insights that trigger swift and decisive business actions. In 2021, your company further accelerated use of virtual and digital platforms to build scale and intensity in training sales teams for continuous learning and engagement, covering around 650 sales employees and 8,400 field force of business partners. Through this model of training, of leveraging network of internal subject matter experts, customized content and global expertise, the sales teams motivated employees to learn and improve performance. Further, automation and digitalization across the supply chain enhanced efficiency in processes and speed to market, providing transparency to suppliers, farmers, customers, and consumers. A simple yet innovative example of this was the timely implementation of a telecaller model to take orders across trade channels. I started my speech with a few words from Mahatma Gandhi. So it's fitting that we end with another famous quote from this great man. It's the action, not the fruit of the action, that's important. You have to do the right thing. It may not be in your power, may not be in your time, that there's be any fruit. But that doesn't mean you stop doing the right thing. You may never know what results come from your actions, but if you do nothing, there will be no result. On behalf of the board of directors of the company, I would like to specially thank the shareholders for the support and confidence in the company over the years, and particularly during these difficult times. I also take the opportunity once again to thank Ms. Nabha Bijapurkar, Ms. Rupa Kurwa, and our own Mr. Murali for their strong contributions and for their service to this fine company. Wishing all of our shareholders the very best of health. Thank you all once again for your patient listening. I will now take up the notice of the 63rd Annual General Meeting dated 4th March 2021, which together with the audited accounts and board's report has been duly sent to the members by email or post and public notice published in newspapers as stipulated. The auditor's report for the year ended 31st December 2021 does not have any qualifications, observations, or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the company. In lieu of the same, there is no need to read the auditor's report. Your company provided members remote e-voting facility on the AGM agenda items from 9th April 2022 from 9 a.m. to 11th April 2022 till 5 p.m. E-voting facility is available at the meeting, and as mentioned in the notice, at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, there will be electronic voting using the e-voting platform of NestLE for all those members who are participating in the meeting but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility. The icon for e-voting is available on the top of your screen, which will redirect you to the e-voting portal of NestLE. The e-voting facility is active and will be closed along with the closure of the meeting. I will now proceed with the agenda as per the notice of the AGM, with 4 ordinary business items listed as agenda items 1 to 4 and 2 special business items listed as agenda items 5 and 6. Agenda item 1. For the adoption of the audited financial statements of the company for the year 2021, including the balance sheet as at 31st December 2021, the statement of profit and loss and cash flow statement for the year ended on that date, and the reports of the board of directors and auditors thereon. Agenda item number 2, for the confirmation of payment of 2 interim dividends aggregating rupees 135 per equity share
for the year 2021 and declaration of final dividend of 65 rupees per equity share of rupees 10 each for the financial year ended 31st December 2021. And agenda item number 3 for the appointment of a director in place of Mr. Matthias Christoph Lohner, who retires by rotation and being eligible offers himself for reappointment. Agenda item number 4 for appointment of SR Borkiboy and Company LLP Chartered Accountants as the statutory auditors of the company in place of Messrs. BSR and Co. LLP Chartered Accountants, the retiring statutory auditors, to hold office for a term of 5 years from the conclusion of the 63rd Annual General Meeting till the conclusion of the 68th Annual General Meeting of the company to be held in the year 2027. Now, the two special business items, which in the opinion of the board is considered unavoidable. Agenda item number 5 for the ratification of remuneration of Messrs. Ramnath Iyer and Company, cost auditors, firm registration 00019, appointed as the cost auditors by the board of directors of the company for the year ended 31st December 2022. And agenda item number 6 for the appointment of Ms. Anjali Bansal as independent non-executive director of the company with effect from 1st May 2022 to hold office for a term of 5 consecutive years, that is up to 30th April 2027, who has submitted a declaration that she meets the criteria for independence as provided in the Companies Act 2013 and listing regulations, and in respect of whom the company has received notice in writing under section 160 of the Act. This year also being a virtual AGM, there are 3 ways in which members can ask questions on the AGM agenda items. The first way is for members who are pre-registered as a speaker at least 48 hours in advance of the meeting at the designated investor email address of the company as mentioned in the notice of the AGM. Secondly, members who have submitted their questions 48 hours in advance of the meeting at the designated investor email address of the company as mentioned in the notice of the AGM. And finally, members can during the meeting post messages in the communication box available on the screen to each member participating in the meeting. So if members have missed pre-registering as speaker or submitting questions in advance, they can also ask questions by posting messages on the communication box available on the screen. I would request Mr. Pramod Rai to collate the questions and share with me after I take up the questions from the speakers and emails received by the company. I will now request INBA to invite the esteemed members who are pre-registered in advance as a speaker. In the interest of time, I would sincerely request all speakers to restrict their questions to a maximum of 3 minutes. We will respond to the questions asked by the speaker and then take up the question from the next speaker. Thank you, Chairman, sir. I would now like to invite our first speaker member, Mr. Santosh Kumar Saraf from Kolkata, having client ID number 100-80328 to speak. नमस्कार आदरणीय सभापति जी, मेरी आवाज आ रही होगी। आदरणीय सभापति जी, उपस्थित निदेशक मंडल के सदस्यगण और मेरे शेयर होल्डर भाइयों बहनों, मैं संतोष कुमार कोलकाता से बोल रहा हूँ। सर, सबसे पहले तो आशा करता हूँ आप जितने भी डायरेक्टर और जितने भी हमारे अधिकारीगण और जितने भी हमारे कर्मचारी जो प्रेजेंट है वो अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और अच्छे से होंगे, उनके परिवार भी अच्छे से होंगे। सर, दूसरा सर, मैं सबसे पहले उन भाइयों और बहनों के लिए अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, कंडोलेंस देना चाहता हूँ जो इस कोविड में के पीरियड में हमें छोड़ के चले गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनके परिवार को
शांति प्रदान करे और उनके परिवार को हिम्मत दे, जिससे वो अपने दुख भरी जो समय है उससे उभर के नॉर्मल लाइफ में प्रवेश करें। और सर, सबसे पहले मैं मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी कोविड की सिचुएशन के बावजूद भी उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया और एक अच्छा रीजनेबल डिविडेंड भी उन्होंने अनाउंस किया, और अभी कल ही अपने इंटीम डिविडेंड भी अनाउंस किया। इसके लिए भी मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। एक साथ मैनेजमेंट को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर हमने काफ़ी अवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन वेरियस एजेंसी से पाए हैं। ये भी हमारे मैनेजमेंट और हमारे कर्मचारियों की दक्षता का कारण ही है, मतलब उनके वर्क का कारण ही है कि हमें ये अवार्ड मिला। तो ये भी दिखाता है कि हमारी कंपनी के कर्मचारी और स्टाफ कितने दिल से और दिमाग अच्छे से काम कर रहे हैं सर। सर, एक मेरा बस जो प्रश्न है, 2-3 प्रश्न है। एक तो जैसे आपने बताया सर कि प्लास्टिक का जो यूज है 2018 के बाद में आपने 8.6% रिड्यूस किया सर। तो ये बहुत है क्योंकि 4 साल के अंदर में सिर्फ 8% रिड्यूस करना मैं समझता हूँ काफ़ी अपने सक्सेसफुल नहीं है। कि अभी प्लास्टिक का यूज, जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो अपना पर्यावरण के लिए भी खराब है। आपने पिक्चर तो देखा भी होगा कि लोग मतलब गाय ये सब खा जाते हैं, फिर उनकी मौत हो जाती है। और अपने समुद्र के अंदर में भी जब नदी गारे में बहते रहते हैं, लोग खाते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको और स्पीड से आप आगे बढ़ाएं, जिससे अपने सक्सेस हो सर। एक सर, मेरे को प्रश्न ये करना कि अपने वुमेन एम्प्लॉय आपके 7,910 एम्प्लॉय है सर, उसमें सिर्फ 14% आपने वुमेन एम्प्लॉय है सर। मैं समझता हूँ ये काफ़ी कम है, क्योंकि अभी वुमेन समान समान वर्क करती है और समान समान अधिकार रखती है। देखिए, हमारी वित्त मंत्री भी वुमेन है, जो आज मतलब करीब कई साल से अपने को वित्त मंत्रालय संभाल रही है, जो अपने कहते हैं लक्ष्मी का घर संभाल रही है। तो मैं चाहूंगा कि अपने वुमेन की संख्या पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी बैठे हैं, हमारे कलेक्टर से मिस्टर खानोरिया जी, उनको भी नमस्कार करता हूँ। वो भी अपने इंडिपेंडेंट, वो भी आपको एडवाइस देंगे कि जिससे वुमेन की परसेंटेज एक अच्छे वातावरण में बढ़ाई जाएगी। मैं समझता हूँ अगर वुमेन की परसेंटेज बढ़ेगी तो पूरे समाज की भी उन्नति होगी, देश की भी उन्नति होगी। ये मेरा अपना विचार है सर। तो इसके बारे में विचार करिएगा सर। दूसरा, डिसेबल एम्प्लॉय अपने सिर्फ 5 है, इनकी भी संख्या बढ़ाइए सर। ये भी मैं समझता हूँ काफी एलिजिबल, इनका अगर मौका मिलेगा। अभी आपने देखा होगा पैरा ओलंपिक मेडल में, ओलंपिक मेडल से ज्यादा उन्होंने पदक भारत के लिए लेके आया और नाम कमाया। तो मैं चाहूंगा उनको भी मौका दीजिए, जिससे उनकी भी मतलब उन्नति हो सर। एक सर, अपनी जो प्रिकॉशन वैक्सीन की स्टार्ट की अभी गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या डिसीजन लिया है कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं 18 साल से ऊपर में, उनको प्रिकॉशन वैक्सीन अगर दे दी जाए तो मैं सोचता हूँ उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो मैं चाहूँगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके और उनकी फैमिली के लिए एक प्रिकॉशन वैक्सीन का प्रोग्राम निकाले, और उनको जो भी 325 रुपया, जो भी 386 रुपया प्राइवेट हॉस्पिटल में देना पड़ता है, वो आप रिसम्बर्ड करें। कि अगर एम्प्लॉई स्वस्थ है तो हमारी कंपनी भी सर स्वस्थ है, तो उसका प्रॉफिट पर कोई विशेष इफेक्ट नहीं आएगा सर। और सर, मेरा एक और कहने का है कि आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए और सोलर एनर्जी के लिए क्या कदम उठाए हैं, और एट प्रेजेंट अपनी कंपनी में इनकी कैपेसिटी क्या है, ये भी बताने का कष्ट करिएगा सर। और सर, लास्ट में कुछ नहीं, अपने जो कंटिजेंट लायबिलिटी है इसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, ये भी बताइएगा सर। और मैं यही कहूँगा सर, आप प्रोडक्ट के दाम बढ़ाइए मगर वजन रिड्यूस मत करिए। ये एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सर, क्योंकि इससे क्या हम समझते हैं, अपने आप को ठगा हुआ समझते हैं। नहीं तो हमें अगर दाम ज़्यादा देंगे तो हमें हैबिट होगी। आप 200 ग्राम का अगर 180 ग्राम कर देंगे तो हमें लगता है ठगा हुआ है। तो ये कम से कम आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो मैनिपुलेशन में क्या बोलते हैं इसको, ये मत करिएगा। वो क्योंकि आदमी से क्लियर अच्छा रहता है, हम लोग भी पता लगे नहीं इतने बढ़े, दाम बढ़ गए, हम उसको सेटिस्फाई का हैबिट होगी सर। अभी माचिस वालों ने दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन काटी उन्होंने 20 कर दी। तो एक आदमी जब लगाते तो खत्म होता है। 40 की रखिए, आप 2 रुपए रखिए, गवर्नमेंट ने अलाउ किया 2 रुपए, तो आप भी गवर्नमेंट ने रखिए। ये आपसे रिक्वेस्ट है। और ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, आपके परिवार और सबकी कामना करता हूँ, सबसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ फाइनेंशियल ईयर 2022 आपके और आपकी परिवार के लिए वेल्दी, हेल्दी और सेफ्टी और प्रॉस्पेरस रहे सर। और सर, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग आपने जैसे कहा कि वर्चुअल मीटिंग में मिल रहे, तो मैं समझता हूँ सर काफी अच्छी है सर। अभी आपने जैसे बताया कि अलग अलग डायरेक्टर अपने घर से और अपने कई डायरेक्टर फॉरेन से भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं,
है हमारे राजभर जी सर कलकत्ता से भी दिल्ली से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ये केवल पॉसिबल वर्चुअल के कारण सर। मैं बॉम्बे से कलकत्ता से आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा फ्यूचर में अगर फिजिकल मीटिंग करने की इच्छा होती है आपकी तो 15 से 20 मिनट के लिए आप वर्चुअल मीटिंग का प्रोग्राम रखिए, जिससे कि आपके जो बाहर वाले शेयर होल्डर है वो भी अपने मन की बात आपको से कह सके सर। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद संतोष कुमार जी, बहुत ही खुशी हुई आपके प्रश्न सुन के, आपकी सहानुभूति, आपका प्रेम लोगों के प्रति और कंपनी के प्रति बहुत ही मेरे लिए बहुत ही उत्साह का एक श्रेणी है। आपके कई प्रश्न हैं, तो मैं काफी जल्दी से उनका उत्तर मैं देना चाहूंगा। पहले तो आपने हमारे कर्मचारी, हमारे एम्प्लॉयज के बारे में पूछा। फिलहाल सब कुशल मंगल है, लेकिन दुख और दर्द हमने भी देखा है, परिवार ने भी देखा है, और हमने पूरी सहानुभूति के साथ, अपने पूरे बल के साथ जिस भी प्रकार से हम हमारे कर्मचारियों की मदद कर सकते हैं वो करते रहे हैं। और इस संदर्भ में आपको खुशी होगी कि हमारे जो कर्मचारी जो है और उनके फैमिली जो है, उनका जो वैक्सीनेशन का पर्व जो है वो कंपनी ने संभाला है। ये हमारी जिम्मेवारी समझिए हमने, न केवल हमारे लिए, हमारे जो फ्रंट लाइन के जो सेल्स जो हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो सेल्समैन काम करते हैं, उनके लिए भी हमने ये अभियान चालू किया है और कई जगहों में काफी अच्छा रेस्पॉन्स इसका मिला है। ये एक परिवार है और परिवार में हर सदस्य का इम्पोर्टेंस होता है और हम इसको पूरी तरह निभाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका जो सलाह जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्व है। दूसरा बात, आपने प्लास्टिक की बात की। हमारा भी इच्छा यही है कि आज की तारीख में हम प्लास्टिक न्यूट्रलिटी पे पहुंचे हैं कि जो जितना हम प्लास्टिक उपयोग कर रहे हैं उतना हम रिसाइकल कर रहे हैं। अक्सर प्लास्टिक कम करने का पर्व जो है काफी मात्रा में कंपनी में जोर दिया जा रहा है, लेकिन इसमें जैसे आप अच्छी तरह समझेंगे संतोष कुमार जी कि ये कमर्शियल बेसिस पे हमें वायबल करनी है कि अगर हम कम भी करेंगे 20% 30% कम भी करेंगे, इसका जो ऑल्टरनेट पैकेजिंग जो है, पेपर है या जो भी है, उसका भी जो है कमर्शियल वायबिलिटी हमें देखनी पड़ रही है। इसलिए थोड़ा वक्त जा रहा है, लेकिन इस पे जितना उत्साह और जितना हमें जोर और बल डालना है, इस पे हम डाल रहे हैं। महिलाओं की आपने प्रश्न पूछी। आज की तारीख में हमारे जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स जो हैं, जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो हैं, वहां पे हमारी 24% की मात्रा जो है महिला है। हमने अक्सर जो हमारे फैक्ट्रीज में जो है अभी कुछ सालों में शुरुआत की है औरतों महिलाओं को नौकरी देने में और ऑपरेटर रोल पे काम करने में, और इसीलिए हमने जो सानंद में फैक्ट्री बनाई उसमें हमने ये दृढ़ प्रतिज्ञा की कि यहाँ हम मेजॉरिटी फीमेल एम्प्लॉयज रखेंगे। इसलिए हमने 65% जो है फीमेल एम्प्लॉयज की फैक्ट्री बनाई है। दो चीज दिखाने के लिए, एक हमें अपने आप को दिखाने के लिए कि महिला जो है, जैसे आपने बड़ी अच्छी तरह आपने कहा कि घर गृहस्थी संभालती है, देश संभालती है, तो क्यों नहीं एक फैक्ट्री में काम कर सकती है। तो ये हम अपने आप को पहले हम कन्विंस करना चाहेंगे और इसके जरिए औरों को भी एक प्रोत्साहन देना चाहेंगे कि आप भी ये कर सकते हैं। तो आज की तारीख में मैं बहुत खुश हूं। मैं भी कुछ दिन पहले सानंद गया था हमारे फैक्ट्री में, बहुत ही खुश हुआ कि हमारे जो महिला जो है इतने अच्छी तरह, इतने स्फूर्ति के साथ, इतना डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिस पे मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा संतोष कुमार जी कि इस पे हम अमल रखेंगे, इस पे हम पीछे नहीं हटेंगे। आज की तारीख में अगर आप हमारे सेल्स फोर्स में देखें, फ्रंट लाइन जो सेल्स फोर्स है, नेस्ले इंडिया में करीब कब से सबसे हाईएस्ट नंबर मात्रा है भारत में, करीब 21% जो है, 21% जो है हमारी फीमेल एम्प्लॉयज है। बड़ी सराहनीय काम करते हैं, बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं और बड़ी खुशी होती है ऐसे काम करते हुए। तो ये हमारा एक लीडरशिप मैंडेट है, ये कोई टोकनिज्म नहीं है। हम ये इसलिए नहीं दिखाना चाहते कि भाई हम कोई खिताब जीतना चाहते हैं।
हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर हम महिला को काम में लाएं तो देश के लिए, कंपनी के लिए और समाज के लिए ये महत्वपूर्ण है, और इसीलिए हम ये करना चाहते हैं। सोलर एनर्जी की आपने आपने पूछी, बड़ी खुशी की बात हो रही है कि जो भी फैक्ट्री में जितना भी हम सोलर एनर्जी कर पा रहे हैं, अब जैसे सानंद में करीब 26% का लिमिट दिया गया है जो हम सोलर ग्रिड से यूज कर सकते हैं, तो उस लिमिट पे पहुंच गए हैं। इसी तरह नंजनगुड फैक्ट्री में, बिचोलिन फैक्ट्री में, बाकी फैक्ट्रियों में भी हम ग्रीन एनर्जी की मात्रा काफी तेजी के रफ्तार से हम इंप्रूव कर रहे हैं, और इसको जो है हम जारी रखेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रा है हमारे देश के लिए। आपका क्वेश्चन प्राइस के ऊपर, दाम के ऊपर, जैसे आप जानते हैं इन्फ्लेशन काफी बढ़ चुका है, और अगर मैं एक वरी या एक प्रश्न चिन्ह मैं देखूंगा आगे के लिए, ये ग्रोथ नहीं है लेकिन इन्फ्लेशन है। और हम जैसे जो आपका सजेशन था कि प्राइस बढ़ाइए लेकिन क्वांटिटीज को बैलेंस रखिए, ये हम जरूर इसका जो है हम अटेंशन देंगे इस पर, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि ग्राहक को पूरा वैल्यू मिले, ये नहीं कि आधा अधूरा वैल्यू मिले। जिसको 200 ग्राम मिले उसको 200 ग्राम मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ हमारे ऐसे ग्राहक हैं जो कि अगर 5 रुपए का है तो 5 रुपए का लेते हैं, अगर आपने 6 रुपए कर दिया तो वो फिर कहते हैं कि भैया ये बहुत महंगा है और इसको हम ड्रॉप ऑफ करेंगे। तो यही हमें एक डिलेमा जो है ये हमें बैलेंस करनी है। कोशिश हमारी यही होती है कि जो छोटे पैक्स हैं उन पर हम प्राइसिंग को बरकरार रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो उस प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, लेकिन आज की तारीख में इन्फ्लेशन काफी बढ़ चुकी है। तो यही आपके मेन प्रश्न थे। मैं बहुत ही आभारी हूं कि आपने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे और वर्चुअल एजीएम की भी बात की। कोशिश तो देखिए, जिस मोहब्बत के साथ हम एक दूसरे से मिलते हैं मीटिंग में, इन पर्सन मीटिंग में, उसका तो महत्वपूर्ण कुछ और ही है, लेकिन फिलहाल इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर ये फैसिलिटी हो हमारे पास तो हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस पे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और आप सब लोग जो है इस पे पार्टिसिपेशन अपना दिखा सकते हैं। तो धन्यवाद संतोष कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्नों के लिए। थैंक यू। Thank you. I now invite next speaker member, Mr. Sarvjit Singh from Delhi, having client ID number 1201910 102090517 to speak. Hello, Chairman sir, can you hear my voice? I can hear you. Hello. Chairman sir, first of all, good morning to you, all the board of directors, all the staff of Nestlé Limited and my co-fellow shareholders. चेयरमैन सर, आज हम आपके सामने बोल पाए इसलिए सर, क्योंकि सर आपके मॉडरेटर ने जो मेहनत करके हमें आपसे जोड़ा है, ये सर इनकी काबिले तारीफ है जो सर हम आपके सामने बोल पाए हैं। जिस तरीके से सर हमारे पूर्व प्रवक्ता ने बोला कि इन्फ्लेशन के कारण जो रेट महंगे हो जाते हैं, तो सर आपने बोला कि जो मध्य वर्ग के जो बंदे हैं 5 की जगह 6 रुपए में, वो कहते हैं नहीं महंगा हो गया। यही बात सर मैंने पिछली सर आपसे एक एजीएम में करी थी, जिस बात की सर मुझे आज खुशी है कि उस बात की सुनवाई हुई है। जो सर मैंने कर्ड के बारे में बोला था, आपने 15 रुपए वाली 18 रुपए में कर दी थी। जिस तरीके से आपने 30 वाली 30 रुपए में रख के कुछ एमएल घटाए थे, और सर जो मैंने बात करी थी वो सर आपके सामने आते ही सर उसकी सुनवाई भी हुई। इसके लिए सर हम आपका शुक्रगुजार कर रहे हैं कि सर आपने कम से कम एक छोटे शेयर होल्डर की भी सर बात को इतनी मान्यता दी, इसके लिए सर आपके शुक्रगुजार हैं। दूसरी बात सर, जिस तरीके से सर आप भी जानते हैं आज की डेट में कैडबरी ने अपनी पूरी की पूरी मार्केटिंग सेट कर रखी है, और सर उससे क्वालिटी में बेटर ही है, हमारे प्रोडक्ट सर हल्के नहीं है। तो सर मैं आने वाले टाइम में सर यही चाहूंगा, क्योंकि सर हमारे प्रोडक्ट इसलिए पब्लिक के सामने नहीं आ पाते क्योंकि सर हमारे आउटलेट्स कम है। और सर जहां तक हमारे आउटलेट्स का मामला है सर, अगर आउटलेट्स नहीं होंगे तो सर पब्लिक को हमारे प्रोडक्ट का पता नहीं चलेगा। क्योंकि सर नेस्ले भी एक ऐसा ब्रांड है जो टक्कर में कैडबरी से भी ऊपर है, अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी खाने में देखेंगे तो। क्योंकि सर एक नाम जो चल रहा है क्वालिटी नहीं दे पाता, पर जो हमारी कंपनी जो क्वालिटी दे रही है, अगर वो पब्लिक के सामने, पब्लिक के पास पहुंच पाएगी तो सर पब्लिक भी समझेगी कि ये प्रोडक्ट उससे ज्यादा बेटर है। तो सर मैं आपसे सर यही चाहूंगा कि सर आप आने वाले टाइम में सर आउटलेट्स खोले सर जगह जगह, चाहे सर हम शेयर होल्डर छोटे हों, चाहे सर आप बड़े हों, चाहे और भी सर जितने मिडिल क्लास है सर,
हर कोई सर आपकी हेल्प करने के लिए भी तैयार है और सर आपके साथ खड़े होने को तैयार है सर। कुछ हमारे जैसे शेयर होल्डरों के पास जगह भी है जो सर आप लोगों को आउटलेट्स के लिए प्रोवाइड करा सकते हैं कि सर हमारी कंपनी दिन पे दिन तरक्की करे। सर उसी हिसाब से जिस तरीके से हमारी कंपनी तरक्की कर पाएगी उसी हिसाब से सर हमें रिटर्न भी मिलेगा। और सर आने वाले टाइम में सर यही चाहूंगा ये कोरोना की चौथी लहर ना आए, तो सर हमारे को फिजिकल एजीएम का सर मौका मिले तो सर हम फिजिकल एजीएम भी करें। थैंक यू चेयरमैन सर। थैंक यू सर्वजीत जी। बड़ी बड़ी खुशी हुई एक नवयुवक शेयर होल्डर से मिलके। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा सर्वजीत, शेयर होल्डर एक शेयर रखे या 10 लाख शेयर रखे, हमारे लिए वो इक्वली उसका महत्वपूर्ण हम उसको देते हैं। इज्जत उसको उतनी ही मिलेगी मेरे हाथों में, क्योंकि आप लोगों के जरिए ही कंपनी चलती है। शेयर होल्डर जो है, शेयर होल्डर का भरोसा जो है, शेयर होल्डर की लगान जो है, उसी से कंपनी चलती है। बड़ी खुशी हुई, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स किए हमारे क्वालिटी के ऊपर और आउटलेट्स के ऊपर। और सर्वजीत, आपको खुशी होगी कि जो जैसे मैंने अपने भाषण में भी कही कि हमारी जो रूरबन स्ट्रैटेजी जो है वो यही है कि कई छोटे कस्बों में, कई छोटे शहरों में हम जाकर, कई छोटे गांवों में जाकर हम अपना प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जो मात्रा जो है वो ज्यादा कर रहे हैं। वो आप ही का सजेशन है और इसी सजेशन पे के बल पर हम और भी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन हमारे प्रोडक्ट्स के कर रहे हैं ताकि हमारी अवेलेबिलिटी और हो। क्योंकि आपने बड़ी सही फरमाया कि हमारी क्वालिटी सबसे बेहतरीन है और हमारे प्रोडक्ट्स पे भरोसा जो है वो सबसे अव्वल है। तो इसलिए जो आपके सजेशंस हैं वो जितने हद तक हम अमल कर सकते हैं हम अमल करेंगे। और आपके जो सजेशन जो आउटलेट एक्सपेंशन पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे आपने जो दिया है, इस पे जरूर हम और भी तेजी के साथ हम बढ़ेंगे। थैंक यू सरबजीत। Thank you. I now invite speaker member Mr. Manjeet Singh from Delhi, having client ID 109076441 to speak. Mr. Manjeet Singh? Am I audible? Yes, sir. Please go ahead. नेस्ले इंडिया की थर्ड मीटिंग जो है आपके डायरेक्टर और जितने भी एम्प्लॉइज हैं और हमारे जो शेयर होल्डर हैं और सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट सभी डायरेक्टरों का मैं स्वागत करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आपकी स्वास्थ्य की भी और आप सब मंगल में रहें। जिस तरह ये बीमारियों का दौर चल रहा है सब स्वस्थ रहें और जैसा टाइम आएगा उस हिसाब से एजीएम का टाइम बनता रहेगा। आने वाले टाइम में हम उम्मीद करेंगे कि शायद आप फिजिकल मीटिंग की तरफ भी अग्रसर हो और हमारे स्पीकर शेयर होल्डर का जैसे बोलना था कि उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है जी। और आपने जितने लोगों को रोजगार दिया है हिंदुस्तान के अंदर, जितने लोग आप बनकर काम कर रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट काफी खत्म किया है। मैगी प्रोडक्ट में काफी लोग रोजगार की तरफ लगे हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है जी ये। और हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनमें हीरो प्रोडक्ट तो है जी नेस कॉफी, मंच कैट, ये आपके प्रोडक्ट जो है जी टीम के और हिसाब से टॉप मोस्ट हैं जी। और कुछ प्रोडक्ट मतलब आप सिलेंडर भी बहुत डेक में आप वो रोल नहीं कर पा रहे जिस तरह आपके प्रोडक्ट की वैल्यू लोग बख्शते हैं, मतलब आपको देते हैं, उस हिसाब से आप डेयरी प्रोडक्ट की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। तो आप इस बारे में जरूर ध्यान करिएगा। और हमारी कंपनी को सिलेंडर कंपनी भी कहा जाता है कि मतलब बहुत जल्दी सिलेंडर करती है। हमने मार्केटों को सिलेंडर कर दिया, हमने टमाटो सॉस को भी सिलेंडर कर दिया। जिस तरह के बाजार में से ऊपर आए एक लिफाफे के अंदर चटनी बनाकर जिस तरह से और कंपनियां दे रही हैं, हम उसमें मार्केट चलती है उस हिसाब से है। हमारी कंपनी को ये लोग कई लोग सिलेंडर कंपनी कहने लगे हैं कि हम प्रोडक्ट मसाला बहुत महत्व रखता है। आपने और मसालों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप मार्केट को कैच करिए। इसमें सबसे बड़ी जो आपकी वजह है ना जी
ये जो सालों से आप गाँव की तरह जम कर खड़े हैं कि हमने डीमर्जर नहीं करना, हमने स्प्लिट नहीं करना, हमने बोनस नहीं देना, ये चीजें जो है ना जी कंपनी के खिलाफ ही जा रही हैं। इस चक्कर में हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो छुपते जा रहे हैं। ये 8-10 प्रोडक्ट तो जो हैं जी लाखों करोड़ों हैं, टॉप मोस्ट हैं। बाकी प्रोडक्ट इसी चक्कर में जो है ग्रोसरी मार्केट के अंदर, वो आपको इन चीजों की तरफ जरूर देना चाहिए। वो मॉल में सब चीजें हर प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देना। हमने इसी अंदाज के अंदर अपना आवाज कट रही है। हाँ, मैं बाहर आ रहा हूँ जी। इसी अंदाज में हमने अपना सूप भी खो दिया जी। सूप का जो अंदाज था हमारा, सूप भी हमारा लुप्त हो गया है। वो भी मार्केट में नहीं दिखता। पता नहीं आप बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। 1985 के अंदर हमने मैगी का लॉन्च किया और हिंदुस्तान के अंदर, और इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उस 100 ग्राम की मैगी का जो लॉन्चिंग रेट था ₹2.25 था, और आज हम जो है इस प्रोडक्ट का जो एक छोटा वैल्यू है उसको ₹2 बढ़ाने की हिम्मत रखने लगे हैं। तो महंगाई का जिस तरह से अंदाज बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमारी कंपनी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर ऐसी कोई आई है नौबत तो हम उसको ₹1 भी बढ़ा सकते हैं, ₹2 की जगह। आप इस तरफ थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा। ये आपकी कंपनी जो है, मतलब जितनी वैल्यू आपका ग्राहक खर्चता है, आप उसका पूरा उसको वैल्यू देते हैं। तो आप अगर जो आपकी प्रोडक्ट लॉन्चिंग में ₹2.25 में लॉन्च हुआ था, आप उसको आज के टाइम में ₹2 करके ना बढ़ाएं तो अच्छा है। और जो आप फ्री आइटम किसी आइटम के साथ देते हो, जैसे मैगी के साथ अभी पीछे 6 पैक वाली मैगी के साथ ये स्टील का एक चम्मच आ रहा था जी साथ में, इसका आप रेट लिखते हो जी ₹35। इस ₹35 की आइटम को आप अगर अपना वो प्रोडक्ट जो स्लो मोशन में है, वो ₹35 की आइटम अगर इसके साथ फ्री दोगे तो कंपनी को ज्यादा फायदा होगा, ना कि आपके किसी ये डायरेक्टर की कंपनी होगी स्टील की, उसको आया ऑर्डर दिया होगा आपने, किसको ये फायदा हुआ है आप इस बारे में जरूर बताइएगा। आप अपना प्रोडक्ट क्यों नहीं देते, आप बाहर से प्रोडक्ट खरीदने की जगह, कि जो आपके जो स्लो मोशन प्रोडक्ट हैं उनको लॉन्च हो सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पिछले दिनों में जो आपको अवार्ड वगैरह मिले हैं, उसकी भी मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है। और CSR एक्टिविटी में मैं यही कहूंगा जी, आजकल गांव देहात और जहाँ भी मतलब डेवलप हो रही हैं जगहें, वहाँ आपके मैगी के प्रोडक्ट जो है साइकिल रिक्शा पर भी बेचे जाते हैं। तो वो लोग जो मैगी आपकी बेच रहे हैं, CSR एक्टिविटी में आप चाहेंगे कि उनके भी बच्चे स्कूल जाएं, और जो उनको चीजें नहीं मिल पा रही CSR एक्टिविटी के अंदर, आप इन ठेली वालों पर जरूर ध्यान रखें जो आपका मैगी का प्रोडक्ट हर नुक्कड़ चौराहे या हाईवे पर अवेलेबल कराते हैं। तो आप उनके बच्चों का जरा CSR एक्टिविटी में जरा अच्छा ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा जी। और थोड़ा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान जो है तरक्की तो कर ही रहा है और आबादी भी बढ़ रही है, उसके साथ साथ हेल्थ भी डाउन होती जा रही है लोगों की। डायबिटीज भी हमारी जो है यहाँ देश में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। तो जो डायबिटीज की आइटम आप लॉन्च करते हो, आटा मैगी या ओट्स वगैरह या और प्रोडक्ट करते हो लॉन्च, तो आप उसमें जो आपकी GST की मीटिंग वगैरह होती है, उसमें ये सवाल उठाया करो कि इसके ऊपर GST कम रखे गवर्नमेंट, ताकि एक सही मूल्य में लोगों को मिल सके ये चीजें। और पीछे एक शेयर होल्डर ने जैसे बोला कि आपके प्रोडक्ट के लिए आप अगर अपनी कोई इस तरह की गैलरी लॉन्च करें, जैसे 140 करोड़ का हमारा भारत है, तो आप अगर हर साल में करीब 5 या 10 भी गैलरियां खोलनी शुरू करें जनसंख्या के हिसाब से, वो आगे आधे टाइम में बढ़ती रहेंगी, तो आपके प्रोडक्ट ज्यादा लॉन्च होते रहेंगे और बहुत अच्छा रहेगा। आपने इस माध्यम से हमें जोड़ा तो हमें बहुत अच्छा लगा। आपके जो एसकेटीएल डिपार्टमेंट मीडिएटर ने जो मेहनत करी है वो रंग लाई है और हम आपसे जुड़ पाए हैं। धन्यवाद नारायणन जी। बस एक लास्ट बात मैंने आपसे और कहनी है
कि आप जैसे शेयर होल्डर का नाम लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। आजकल जासूसी बहुत चल रही है जी। ये अकाउंट नंबर मत बोला करिए जी। अकाउंट नंबर बोलने से ना जी, ये उसने जाके डाल लेना है और देख लेना है क्या हो रहा है। ये बायोडाटा हमारा जो है ना, नाम तक की सीमित रखिए। आप उसके पास हमारा ना कोई अकाउंट नंबर बताइए, क्योंकि ये सार्वजनिक रूप से बताना ठीक नहीं है। बाकी आप इस जो है एजीएम के अध्यक्ष हैं, जो आपको अच्छा लगेगा होगा तो वही जी। ये एक सुझाव है। धन्यवाद। थैंक यू मंजीत जी, थैंक यू। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, दोबारा मिलके। बड़ी 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 और कई आपके सुझाव हैं, बहुत ही अच्छे सुझाव हैं, जिस पे हम गौर फरमाएंगे। आपने बड़ा अच्छा कहा कि अपने कंपनी के प्रोडक्ट दीजिएगा चम्मच देने के बजाय। और आपको यही आश्वासन देना चाहूंगा कि ना केवल मैं, लेकिन मेरे कोई भी डायरेक्टर जो हैं, किसी के पास कोई स्टील वाली कंपनी नहीं है या कोई चम्मच वाली कंपनी नहीं है, कोई चमचे यहाँ बैठे नहीं है। तो इसलिए जो है आपको ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा कि इस पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हमारी किसी की भी नहीं है। लेकिन आपका सजेशन बड़ा अच्छा है कि और अपने कंपनी के प्रोडक्ट दीजिएगा। वही हम करते हैं। नूडल के साथ सॉस देते हैं, कभी चॉकलेट देते हैं, कभी कॉफी देते हैं, कई कई प्रोडक्ट्स देते हैं। कभी कभार डिफरेंट आइटम भी देते हैं, क्योंकि ग्राहक को भी थोड़ी जो है वैरायटी की जरूरत है। दूसरी बात, आपने एक पॉइंट कही कि हमें सरेंडर की कंपनी कही। मंजीत जी, आपको मालूम ही है, आप हमारे कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आप जानते हैं कि जैसे सरदार की पगड़ी होती है, वैसे कंपनी हमारे नेस्ले की पगड़ी जो है वो मोगा है। और मोगा जो है पंजाब में है, और वहां का सरेंडर का तो कभी नाम किसी ने लिया नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे एक ही आश्वासन देना चाहूंगा कि कोई सरेंडर वाली कंपनी नहीं है। हमारी कंपनी सोच समझ के प्रोडक्ट डालती है। जब प्रोडक्ट चलती है और जब प्रोडक्ट्स के कुछ ट्रैक्शन मिलता है तो उसको बरकरार रखती है। जब उस पर उतनी रिस्पॉन्स नहीं आती है तो फिर उसको धीरे धीरे कम करती है। लेकिन ये कोई सरेंडर का हिसाब नहीं है, ये सोच समझ के जो है काम किया जाता है। लेकिन यही आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे पिछले 5 साल में करीब 100 नए प्रोडक्ट्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, ये रफ्तार हमारी चलती रहेगी। और आगे जाके भी आप नए प्रोडक्ट्स हमारे कंपनी के देखेंगे। हर प्रोडक्ट में जो क्वालिटी और ट्रस्ट जो आप हमें देते हैं और जिसका आश्वासन हम आपको पहुंचाते हैं, ये कंटिन्यू रहेगा। और इस हिसाब से नए प्रोडक्ट्स, आपने डायबिटीज की बात की, अभी फिलहाल ही हमारी एक प्रोटीन सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस हुई है, रिसोर्स हाई प्रोटीन करके, जो डायबिटिक्स के लिए है। जो डायबिटीज वाले जो पेशेंट्स हैं उनके लिए है। तो इस प्रकार से हम भी धीरे धीरे हमारी पोर्टफोलियो को बढ़ाते जाएंगे। लेकिन केवल एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मौका जो कंपनी का है, जो अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने हैं, और जिस प्रकार से हमें सहानुभूति और ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आप जैसे शेयर होल्डर और ग्राहकों से मिली है, वही हमें प्रोत्साहन देती है कि हम आगे जाके इस पे और भी अमल करें और नए प्रोडक्ट्स लाएं। तो मंजीत जी, आखिर में एक ही पॉइंट कहना चाहूंगा कि सरेंडर का तो सवाल ही नहीं है। सोच समझ के काम करेंगे, और क्योंकि आप लोग भी सोच समझ के काम करने वाले कंपनियों के साथ ही काम करना चाहेंगे, न केवल ऐसे कंपनियां जो कि बस प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किया करते जाएं और कोई समझदारी ना हो, या कोई इंसाइट ना हो, या कोई उसमें कोई कमर्शियल प्लान ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी, आपका प्यार और मोहब्बत और जो आपका ट्रस्ट हमारे कंपनी पे है, सर आंखों पे है। और मैं बहुत ही आभारी हूं आपके इस ट्रस्ट पे। थैंक यू वेरी मच। Thank you. I now invite next speaker member, Mr. Yusuf Yunus Rangwala from Mumbai, having client ID number 1601-01-0000-232396 to speak. Mr. Rangwala. Yeah. Good morning. Good morning, sir. Can you hear my voice? Yes. Good morning, sir. I'm speaking from Mumbai. Sir, सुरेश सर, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए सर। सर, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। सर, आपका शेयर डिपार्टमेंट वेरी एक्सीलेंट सर्विसेज है सर। दिस इज 63rd एनुअल मीटिंग है सर। मैं जानना चाहता हूँ कि सर ये अपना कोरस पीपल की सर्विस
सर उनकी लाजवाब है सर। उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे टेलीफोन में दिया सर, ये दिखाती कि हाउ द कवर एजेंट आर कीपिंग अस इन द टच सर। सर सुरेश सर, मैं अभी पॉइंट पे आऊंगा, पॉइंट नंबर 1 सर, नेस्ट कॉफी इज नंबर 1 सर इन इंडिया सर। सर आपका सर नेस्ट कॉफी में 10 रुपए का भी आता है और 2 रुपए का भी आता है। मुझे जानना चाहता हूँ कि भाई नेस्ट कॉफी में नया ब्रांड क्या है, मतलब ब्रू जो बनाते हैं, ब्रू ब्रू कॉफी सर साउथ में, उनका और अपना क्या कॉम्पिटिशन लीवर का सर। पॉइंट नंबर 2 सर, मैगी सॉस जो अपना वन ऑफ द हॉटेस्ट बेचने वाला का प्रोडक्ट है सर। मैगी सॉस में अभी आप बोतल के अंदर 65 रुपीज का आप नूडल फ्री देते सर। मेरा एक सजेशन है, अगर आप उसको प्लास्टिक में बना दे तो क्या होता है सर, कांच का जो बोतल है ना, अगर आप घर पे लेके जाते हैं आपका टूट जाता है, अगर जरा भी स्कूटर में आपका इधर उधर तो ब्रेक हो जाता है सर। मेरा एक जानना था, अगर हो सके तो जो कांच का बोतल आप उसे प्लास्टिक में बनाना, इस बारे में आप जरा, मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ सर। अपना प्लान टोटल भी आएंगे 11 प्लान, 2 गोवा में है, एक मैसूर में है, एक अहमदाबाद में है। बड़ा प्लान कौन सा है सर? सर अभी पॉइंट नंबर 3 सर, अपना मेन अपने जो सूप में है, सूप में अपना जैसे जैसे नॉन वेज और वेज दोनों अपन प्रोडक्ट बनाते हैं सर। सर मैं जानना चाहता हूँ सूप डिवीजन में कौन सा नया प्रोडक्ट है सर? सर ये सूप डिवीजन में पहले आप 1:1 सर देते थे, वो अभी आपने क्यों बंद कर दिया सर सूप के अंदर सर? आप चालू करिए तो आपका सूप, आपका मैगी सूप सर इतना अच्छा होता है, उसके बारे में कोई नो बडी कैन बीट अवर मैगी सूप सर। एंड पॉइंट नंबर 4 सर, चॉकलेट डिवीजन, तो अपना प्रीवियस स्पीकर ने मेंशन किया सर, अपना चॉकलेट डिवीजन में अपना वी आर द लीडर सर इन द वर्ल्ड। एंड सर मैं जानना चाहता हूँ सर, अपना फॉरेन में अपना चॉकलेट भी आती है, नेस्ले सब जो आती है उसका और अपने में क्या कंपटीशन है सर? और सर पॉइंट नंबर 5 सर, ये अपने एनुअल रिपोर्ट आपने इतना लाजवाब बनाया है और अपना शेयर डिपार्टमेंट को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे भेजा जो बहुत लाजवाब है सर, कलरिंग, और सर आपका चेहरा ऐसा हंसता हुआ है सर, उसमें छोटा सा मैं शेयर पेश करना चाहता हूँ। ये हुआ 63 एनुअल मीटिंग, 2 साल के बाद अपना 65 में सर वे एंटर कर रहे इन ईयर ऑफ 2024। सर मैं जानना चाहता हूँ लास्ट बोनस आपने कब दिया था सर? बहुत साल हो गए सर। आज अपना मार्केट में अपना 10 रुपीज शेयर, आज उसका रेट सर अराउंड 18,000, अब ऊपर में सर 19,000, साढ़े 19,000 रुपए तक गया था सर। मैं जानना चाहता हूँ ये इतना अप डाउन जो हुआ, आपके ध्यान में क्या है सर? बोनस कब तक आ सकता है सर? आसाम रह सकते? और सर पॉइंट नंबर 5 सर, वेदर वी आर स्प्लिटिंग अवर शेयर सर, मैं जानना चाहता हूँ। और सर अपना 10 पेज नंबर 10, 11, 12 में सीआर एक्टिविटीज आप जो कर रहे हैं सर, आपका सर देखने हमें बहुत खुशी होता है। फार्मर, आप सब पुअर पीपल को आप इतना हेल्प करते हैं और सर उनकी दुआ से कि आज अपनी कंपनी इतनी आगे है सर, और आज अपना रेट इतना ऊंचा है सर, ये जान के सर मुझे बहुत खुशी हुआ। और आपका शेयर डिपार्टमेंट को सर मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे बैलेंस शीट भेजी और आपसे जुड़ने के लिए सर मुझे चांस दिया। मुझे और तो कुछ नहीं पूछना है, छोटा सा शेयर पेश करना चाहता हूँ सर। आपसे मिलने के लिए, आपसे सुरेश सर मिलने के लिए अगर हो सके सर, बॉम्बे में सीआर एक्टिविटीज हो सके, आप उन्हें उसमें हमें बुलाइए सर। आपका गोवा का प्लान हो सके जहाँ पे सॉस बनता है, आप हमें सर फैक्ट्री विजिट कराइए। मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, हो सके अथवा नहीं तो मुझे आपको मेरे मोबाइल पे ईमेल पे तो मुझे फिल्म भेज दीजिए, हो सके तो सर मैं देख सकता हूँ। आप मुझे मेरे ईमेल पे फिल्म भेज सकते हैं आपका फैक्ट्री के बारे में। मैं जानना चाहता हूँ सर प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चर होते सर। मैं दूसरा पॉइंट सर, वाई वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग द अपना जाम सर? अपना जाम प्रोडक्ट में आपका मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपका क्या विचार है सर? मुझे जानना चाहता हूँ। और तो मुझे कुछ नहीं कहना है, ये आपका एनुअल रिपोर्ट अराउंड 135 पेजेस का है सर। मुझे फिजिकल कॉपी मिला और मैं देख के सर इतना खुश हुआ। ये एनुअल रिपोर्ट हर साल मैं अपने पास रखता हूँ और सर मैं देख के बहुत खुशी होती है। धन्यवाद सर, हैव अ गुड डे, नथिंग मोर टू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच सर, हैव अ गुड डे सर। फ्रॉम मुंबई सर, शेयरहोल्डर फ्रॉम मुंबई स्पीकिंग सर। थैंक यू यूसुफ भाई, थैंक यू वेरी मच। बड़ी खुशी हुई आपसे दोबारा मिलके। आप हरदम हमारे एजीएम में आते हैं, पिछले बार भी आपने अपने प्रश्न पूछे, बड़े अच्छे प्रश्न पूछे, और आपका जो मोहब्बत है और आपकी जो लगान जो है हमारे कंपनी में, मैं तो इसका आभारी हूँ, क्योंकि आप ही के बल पे और आप ही के प्रोत्साहन पे और आप ही के ट्रस्ट पे कंपनी भी आगे बढ़ती है, आगे चलती है। कुछ प्रश्न आपके हैं, कई प्रश्न हैं, मैं जल्दी से आंसर करूंगा जो जो
प्रश्न जो है इमीडिएटली आंसर कर सकूं। नेस्कैफे आपने कहा, नेस्कैफे तो हमारा एक फ्लैगशिप ब्रांड है कॉफी में, और आपको खुशी होगी यूसुफ भाई कि हम मार्केट लीडर्स हैं। इसमें 50 से ज्यादा मात्रा जो है, मार्केट शेयर जो है वो नेस्कैफे की है। तो सबसे बड़ा कॉफी जो इंडिया में जो है, और ये कई सालों से है, ये नेस्कैफे है। इसमें नए वेरिएंट्स काफी हैं। अभी नेस्कैफे गोल्ड करके है, जो आप जैसे जो महत्वपूर्ण शेयर होल्डर हैं वो पी सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, प्रीमियम कॉफी है। ब्लैक रोस्ट करके एक है, जो कि जिनको स्ट्रॉन्ग कॉफी की जरूरत है वो ब्लैक रोस्ट, डार्क रोस्ट पी सकते हैं। एक हमारा कॉफी मिक्स अभी इंट्रोड्यूस किया है 3 in 1, उसको ऑल इन वन कहते हैं, केवल 10 रुपए में। वो भी बड़ा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मुंबई में भी मिलता है, तो आप जरूर इसको आजमाइएगा। मैगी सॉस का आपने कहा, फिलहाल यूसुफ भाई आपका सजेशन तो अच्छा है, लेकिन एक ही उसमें कमजोरी है कि हम प्लास्टिक में नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्टिक को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे पहले सराफ साहब जो हमारे शेयर होल्डर हैं, उन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था कि प्लास्टिक को और कम करिए। अगर बोतल को मैं प्लास्टिक में ले गया तो दोबारा प्लास्टिक मेरी बढ़ जाएगी। तो यही एक तकलीफ है इसमें, इसलिए हमने बोतल में ही रखा है। प्लांट्स हमारे 9 प्लांट्स हैं इंडिया में, और 9 प्लांट्स में सबसे महत्वपूर्ण प्लांट जो हमारा मोगा में है, लेकिन कई और नए फैक्ट्री अभी जो हमारे गुजरात में बनी है, सानंद में बनी है। बड़े जल्दी ही वो एक अव्वल दर्जे का सबसे दूसरा या तीसरा बड़ा फैक्ट्री हमारा बन जाएगा। तो इसमें काफी हम लोगों ने तरक्की की है, और भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। आपको ये आश्वासन देना चाहूंगा कि जो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान जो है काफी स्ट्रांग है इन कई कैटेगरीज में। सूप फिलहाल यूसुफ भाई हम बनाते नहीं हैं, एक जमाने में बनाते थे। वही मिस्टर जो पहले जो मंजीत सिंह साहब ने भी क्वेश्चन पूछी थी सूप के बारे में, सूप हमने बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि उसका रिलेटिव जो साइज जो था वो काफी छोटा था इस मार्केट में। लेकिन नए प्रोडक्ट्स की सजेशंस आप जारी रखिएगा, क्योंकि आपके जो सजेशंस होंगे उस पर हम अमल करेंगे। चॉकलेट्स पे हमारी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, और भी नए प्रोडक्ट्स हम चॉकलेट्स में लाएंगे। आपने बोनस और शेयर स्प्लिटिंग की बात की, आपके जो सजेशंस जो हैं वो सराहनीय हैं। गौर फरमाएंगे इस पे कि कब करें और कैसे करें और किस हिसाब से करें, लेकिन ये सोच विचार पे रहता है, और सोच विचार पे आपके जो सजेशन जो हैं उस पर हम देंगे। जो आपने एनुअल रिपोर्ट की बात की, बहुत ही खुशी हुई मुझे ये सुन के कि आपको बड़ा पसंद आया, और इसका जो गेटअप और इसका जो मटेरियल जो है आपके लिए काफी यूजफुल था। और ये सब क्रेडिट मेरी जो टीम जो है उन्होंने बनाई है, और उनकी क्रेडिट है कि अच्छा काम उन्होंने किया। जैसे कि आप आज के वर्चुअल एजीएम पे भी आपने कोरस के टीम को आपने सराहा, और ये भी मैं समझता हूं कि ये हमारी कोशिश हरदम यही रहेगी कि शेयर होल्डर के साथ हम रिलेशनशिप जितना बेहतर, जितना नजदीक हम रख सकते हैं, रखना चाहेंगे। और ये हमारा एक खुशी का मौका है, जबकि हम साल में एक बार आपके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो कोशिश हमारी यही रहेगी। आपने फैक्ट्री विजिट की बात की, फैक्ट्री विजिट हम नॉर्मल कोर्स पे ऑर्गेनाइज ऐसे करते नहीं हैं, लेकिन कभी कभार अगर आप मानो सानंद की तरफ या बिचौलिन की तरफ या पोंडा की तरफ आप जाएं, और हमें अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो जरूर आपको फैक्ट्री दिखाने में हमें खुशी होगी, क्योंकि फैक्ट्री जो है आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, और आपको देखना चाहिए कि कंपनी के हाई स्टैंडर्ड्स क्या हैं, किस कारण हम इस देश के महत्वपूर्ण फूड कंपनी है, और उसका कारण जो है हमारा क्वालिटी और सेफ्टी है। आपने जाम की बात की, अब जाम तो वैसे हाई शुगर प्रोडक्ट है यूसुफ भाई, तो इस पर तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होगा, और सेगमेंट भी काफ़ी छोटा है, क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया में जाम के अलावा मुरब्बा और स्प्रेड्स कई प्रकार के हैं, लेकिन फिर भी आपका सजेशन है, सर आंखों पे है, और इस पे भी हम जरूर गौर फरमाएंगे आगे के लिए। बड़ी खुशी हुई आपसे दोबारा मिलकर, और आपके प्रश्नों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यूसुफ भाई। Thank you. I now invite our next speaker member, Mr. Raja Venkatasubramaniam from USA, having client ID number 1301240000
540-1893 to speak. Good morning to the chairman and the board of directors. Am I audible? Very much. Thank you. First and foremost, congratulations to Mr. Murli, our company secretary, who has been long enough to, in fact, celebrating a 25th AGM. Congratulations, sir. And my questions are related to the recent conflict between Ukraine and Russia. Are our sales or imports affected? One. Number two is the ongoing economic instability in Sri Lanka. Has it affected our Indian sales or imports? The third is I just request the company to inform all the shareholders about the new products being launched, because there's this, okay, apart from seeing it on the press or on the TV, but if a small communication can be sent to, a mail can be sent to all the shareholders, that will be good. That's my suggestion, sir. Thank you, sir. Thank you, Raja. Thank you. Firstly, thank you for joining at a very unearthly hour. I know you are calling from the US, so it cannot be broad daylight like what it is in India. So I'm really deeply grateful. Nice to see you once again. I mean, not just as a shareholder of the company, but also as a colleague. And also, I think shareholders need to know the longevity that your family has. You are a third generation Nestle employee. So therefore, I think it's a great honor to have your grandfather, your father, and you also work. You retired since from the company, but I think it's an honor to deal with somebody who has spent a lot of time in the company. Very good questions you asked, Raja. See, on Ukraine and Russia, basically we have really nothing much to do with both these markets. They are not big export markets for us. However, at this time we have been approached to see whether we can make some supplies on behalf of Ukraine. It is being worked on because the recipes are quite different. The products are quite different. The tastes are very different. You know, the Indian taste and the Ukrainian taste are quite different. But your colleagues in Nestle are working on this, and I do hope that we will be able to serve, because a consumer served is a consumer worshipped wherever it is, in whichever part of the world it is. So we are trying to do that. The situation in Sri Lanka is very worrying, Raja. I mean, it is very sad to see a fantastic country have such a meltdown. It's unfortunate. Our team is holding up extremely well. I'm very, very proud of our team in Sri Lanka for the manner in which, and the maturity and the dignity with which they are conducting activities. It is not easy with 12 and 13-hour power breakdowns, with shortage of food, with medicines, with various other things being quite short. Our own sales to Sri Lanka are very limited. In fact, Sri Lanka is an export hub for some of our products, and that's what we are now watching out on, to see whether we are able to service those markets. But it is a difficult and it is a worrying situation. I do have concern for the safety and security of all our people. That is the number one concern. And the business will come and go, but the safety and security of our people is always and will always be paramount as far as I am concerned. Very good suggestion on new products, information to shareholders. I will certainly discuss with our team on how we can try and execute something like this, because yes, we as a company we keep launching 20, 30, 40 new products a year. It's not possible for all consumers to keep track of it. But at least for shareholders, if we can find a way, at least an electronic way of communicating it, it is a good suggestion. So thank you, Raja. Stay safe, and thank you very much for your participation. Thank you. I now invite our next speaker member, Mr. Tony Bhatia from Faridabad, having client ID number 109-14464 to speak. Mr. Bhatia? हेलो सर मेरी आवाज आ रही है? मैडम मेरी आवाज आ रही है? हेलो आ रही है टोनी जी, आ रही है। हेलो सर मेरी आवाज आ रही है? सर हेलो हेलो बिल्कुल आ रही है।
बिल्कुल आ रही है टोनी जी, बोलिए। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ओके। रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, eminent board of directors, Madam Swati ji, Kanoria Saab and other eminent board of directors. Sir, first of all, you gave us such a beautiful chairman speech जिसमें आपने कंपनी के बारे में बताया. The speech was so beautiful, Mr. Chairman. There is a all-round progress in the company. Our sales are 1,46,337 millions. Marvelous. A PAT, profit after tax, that is 21,449 million. And you gave us a dividend of rupees 200 per share, such a good dividend, total dividend, I mean to say, such a good dividend, Mr. Chairman. Sir, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, share price that is not picking up. Last year the same price was there, 17, 18, whatever, I don't remember. Today again the price, you are giving us a good dividend, no doubt. और मैं हिंदुस्तान लीवर को देखता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर रीनेम्ड, वो that share touched I think 2,900 or 3,000, today 2,100. Same with Britannia. तो उन चीजों को देखूं तो वो शेयर तो हमसे काफी गिरे हैं. खैर मैं वो कम नहीं कहा उसके इसके. Our share price is not picking up. Yes, our quality is one of the best, second to none. इस पे कभी compromise नहीं करना. मुझे याद है रुचि सोया, ये बाबा रामदेव जी 4-5 साल पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा नेस्ले का पंछी उड़ जाएगा, हिंदुस्तान लीवर का लीवर बैठ जाएगा. क्वालिटी पे कभी compromise मत करना. My dear respected chairman, quality is our first motto. Corporate governance you have shown in such a good manner. I appreciate it. For this credit goes to CFO and company secretary also. CSR activities पे आपने काफी ध्यान दिया, इसके लिए मैं आपकी तारीफ करूंगा. कोरोना काल में भी आपने जो CSR एक्टिविटीज पे गरीबों की तरफ ध्यान दिया, ये पॉइंट एक तारीफ के काबिल है चेयरमैन साहब. बोनस इश्यू के बारे में, यस, इन दिस रिगार्ड आई विल से I am a shareholder of this company since 1977. मैंने उस समय थोड़े से शेयर जो मेरी चादर में थे परचेज किए. 96-7 तक मुझे पूरी तरह याद नहीं. मेरे शेयर में काफी एप्रिसिएशन हुआ बाय वे ऑफ बोनस इशू. उसके बाद सर वो मेरा पोर्टफोलियो वहीं का वहीं पड़ा है. तो मैं ये शायद सरदार मंजीत सिंह ने भी और एक मेरे मुंबई से यूसुफ भाई ने भी कहा था. तो मैं भी यही कहूंगा, अगर ठीक समझो तो बोनस पे जरूर सोचिएगा. मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, माइक्रोसॉफ्ट. आई एम नॉट ए शेयर होल्डर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. आई हर्ड दे यूज्ड टू गिव आफ्टर एवरी 4-5 years 6 years बोनस शेयर, बट दे डोंट गिव एनी डिविडेंड. तो आप देखिए, सोचिए. और हाँ, यूसुफ भाई ने जो मुंबई से थे, उन्होंने मुंबई से हैं, उन्होंने कहा स्प्लिटिंग के लिए, सर मैं इसके डेडली अगेंस्ट टू स्प्लिटिंग के. आगे आपकी मर्जी. MRF टायर्स, दे डोंट गो फॉर स्प्लिट अप. और सम अदर कंपनीज आल्सो, अभी सब मुझे ध्यान नहीं, सिर्फ MRF टायर्स का मैं शेयर होल्डर हूं, तो मुझे ध्यान है कि वो स्प्लिटअप के अगेंस्ट है. तो मैं आपसे यही कहूंगा, स्प्लिटअप के बारे में आप सोचिएगा. आई एम डेडली अगेंस्ट इट. बाकी आप जैसे ठीक समझें. ज्यादा वक्त चेयरमैन साहब नहीं लूंगा. मैं ये जो लिंक प्रोवाइड किया जिससे आज मेरी आपकी ये अपने व्यूज में आपको, बोर्ड को और सभी भाइयों को, शेयर होल्डर्स भाइयों को दे रहा हूं, इसके लिए मैं प्रमोद राय जी का, गुंजन जी का और कोरस पीपल का धन्यवादी हूं कि दे प्रोवाइड मी अ लिंक. सो आई एम गिविंग माय व्यूज. ज्यादा वक्त ना लेते हुए सर एक बार फिर मैं आई सपोर्ट एंड सेकंडेड द बैलेंस शीट. और मैं नेक्स्ट ईयर अगर खुदा परमिट, टाइम परमिट करे, खुदा ने परमिट किया, तो हम एक फिजिकल मीटिंग हम देखना चाहते हैं. जैसे आपसे पहले एयरफोर्स में, उससे पहले फिक्की ऑडिटोरियम और जगह जगह मिला करते थे. तो हो सके तो उस पर भी आप देखना, अगर टाइम परमिट करें. विद दिस वर्ड्स आई सपोर्ट एंड सेकंड इन द बैलेंस शीट. गॉड ब्लेस यू मिस्टर चेयरमैन. थैंक यू मिस्टर चेयरमैन. थैंक यू टोनी जी. थैंक यू वेरी मच. बड़ी खुशी हुई आपसे. पिछले बार भी आपने हमें बड़े प्रोत्साहन दी और बहुत ही आपने अपना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दिखाया. अब की बार भी आपने वही स्नेह, वही मोहब्बत, वही प्यार आपने दिखाया. बहुत ही मैं आभारी हूँ. और ये चीजें जो है मेरे लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि आप लोग जो कहते हैं वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. आपके कुछ ऑब्जर्वेशन थे. एक तो शेयर प्राइस पे था भाटिया साहब. एक तो आप जानते हैं कि शेयर प्राइस कैसे जाती है ऊपर, कैसे आती है, उसकी रफ्तार क्या है, उस पर तो मेरा कोई पर्सनल कोई ना कंट्रोल है, ना कोई हाथ है. केवल मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा, जो
जो हमारे कवि हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मैं समझता हूं कि आपका कंपनी जो है वो हिम्मत वाला कंपनी है। कई चट्टानों को पार कर चुका है, कई मुश्किलों के से सामना कर चुका है, इस मुकाम पे आज पहुंचा है और आगे भी पहुंचेगा। आप धीरज रखिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी इस कंपनी में फेल नहीं होगा, क्योंकि इज्जत, वफादारी, क्वालिटी, ट्रस्ट और ईमानदारी जो है इस कंपनी के बूंद बूंद में है, और इसी पे ये कंपनी चली है इतने सालों से, 110 सालों से भारत में चली है और आगे भी इसी के कारण चलेगी। आपके आपके जो सजेशन जो हैं, जो जो बोनस इश्यूज के बारे में, जरूर हम इस पर गौर फरमाएंगे। आपके सजेशंस हैं और उचित वक्त पर हम इस पर अमल करेंगे। लेकिन आपका जो सजेशंस जो है और जिस प्रकार से आपने कंपनी को जो है एक इंकरेजमेंट दी है आज, मैं बहुत ही आभारी हूं आपका। तो प्लीज स्टे सेफ टोनी जी, आपके ब्लेसिंग्स और गुड विशेस के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूं, और आप सेफ रहिए अपने फैमिली के साथ, और नेस्ले के प्रोडक्ट्स और नेस्ले का डिविडेंड और नेस्ले की जो बेनिफिट्स जो है आप आजमाते रहिएगा, मेरी यही प्रार्थना होगी। थैंक यू वेरी मच मिस्टर भाटिया, थैंक यू। Thank you. I now invite our next speaker member, Ms. Renuka Bhatia from Faridabad, having client ID number 108000239 to speak. Ms. Renuka Bhatia is connected over an audio Madam, call. she's not coming. Madam, she's not coming. Madam, she's not coming. Okay. उनका Okay, नाम thank you. We'll move to the next question in that case. I now invite our next speaker member, Ms. Celestine Elizabeth Mascarenas from Mumbai, having client ID number 1205 140000090218 to speak. Hello, am I audible? Very Yes. much, Hello, madam. sir. Very much. Yes, thank you very much. Respected Chairman and MD, Mr. Suresh Narayan, other honorable members of the board, my fellow shareholders attending virtual meet, my name is Mr. Celestine Elizabeth Mascarenas. I am speaking from Mumbai. First of all, I thank the company secretary and his team for sending me AGM notice. A physical copy would have been great joy to. I forgot to write in the text that please send me a physical. Anyway, you can send me later also. And for registering me as speaker on my request. And also this platform, giving me this platform where I am audible and visible. Thank you, Chorus team. Now I come to the annual report. Very good, self-explanatory, with lots of pictures and also adhering to all the norms of the corporate governance. One chapter I find, I don't know because I could not online, I have found difficult to read, that ESG chapter is included, you know. Okay. Now I go to the working, all parameters are good. And what is most good is dividend of rupees 200 per share. It is really creditable in these tough days with COVID and so many other things are coming. Also, our market cap is very good. And if the share is splitted, of course, some shareholders were not for it. But I feel that if you see HUL, and even a small shareholder can be the shareholder of this great company which has been more than 100 years old. In India, it is 63. I feel, because I am a now senior person, so I have nothing. I say let all the youngsters be in this share, like it's such a great company and with great products. So my view is that, but I have another problem is my shares are in the physical, because I purchased, today I could not purchase these shares because with 18,000 plus it was impossible to purchase. But because years back, 30 years back I purchased, it was hardly anything. So mine are in physical and I have great problem in making it demat. Last 5 years, all hassles are going on, which was not earlier, and purposely I didn't demat because I know there is a temptation to sell because it was physical. It was in my hand when there were great problems.
I would go to my broker, he knows me, bank verification, and he would give me little less. That's finished. If I have great problem, I didn't have so far, but now making a demat, and especially Alankit, I have in other share, I had a great problem. I went to the chairman of that bank, and then ultimately it was made. So that's another story. Sir, please, your team should help me in dematting my shares. I've got 2 folios in the physical form. So please, can you, if the secretary can come in contact, or somebody who can help me, which I have done in Titan. Titan also I faced a then somebody was delegated, and at least my shares are now in demat. I am happy about it. So, sir, I want this favor from you. Now I congratulate you and your team for all the awards, accolades, and also for the good CSR work as given in the annual report. So now I go to my queries. So any acquisition in the piping for inorganic growth? Number 2, in which product we are enjoying a very high margin, and in which our market share is the highest, whether in milk products, soups, or ready to eat, or whatever, Maggie's, which we are the highest in the market share. We are a name by itself. The third question, any supply chain bottlenecks or disruptions we have faced, especially now the COVID is past, especially because of this Ukraine-Russia war, and what methods are taken for de-risking this bottlenecks? Do we have sufficient stock of raw materials? For how many days we are holding this raw material? So if you could throw some light, it would be very great. Another is my fourth question is, our 9th factory or Navratna is a very nice name, Ratna, in Sanad, Gujarat. State of art, paperless, ecological, and digitally advanced environmental, all cleared, and with paperless, ecological, and digitally friendly. So I have been applied for ESD certification for this. And my suggestion, one more is, what about having such a factory in Maharashtra as an organic growth? Maharashtra is growing great, and we have Mumbai. I'm not telling in Mumbai, around Mumbai somewhere, so that I can visit this sort of state of art myself. I can fix up and all. Going to Gujarat is not that easy for me, even if you arrange. I heard another person asking. Lastly, I support all the resolutions. I like the way you answered, sir, for your chairman's speech also, and your answers were fantastically, the way, that honesty, I never seen in any such chairman. Really, kudos to you, congratulations to you, and your and also I wish good health to you and the entire team, especially the staff, with good health, prosperity, and a sustainable future, focusing on the 5 P's, that is namely people, purpose, partnership, planet, performance. I add here a 6th P. Last year you suggested, today I say the 6th P, which is prayers. That prayers are also equally important, especially in the case of Ukraine-Russia war. I have been praying for 3-4 times a day, because we don't know what's going to happen and where all our food stuff, I don't know what, so I keep on praying, because something which doesn't become, I go to the prayers, prayers are, I don't say any gods, I see it's a prayers, having a dialogue with God and to solve it, with this, I thank you very much. My husband wants to say 2 lines. Please allow him, sir. Hello, can I speak? Hello, can I speak? I'm a shareholder. I'm holding over 100 shares of this company in physical form. My problem is to demat. So kindly help me to demand my 100 shares in this company, which I've taken years ago. Another thing, now because of COVID, our immunization body is not immune to the virus. So I would like other companies, immunized drink or food will be very good. And most of all, most of the shareholder companies who are friendly send their new product launches
to the shareholders who would like to taste and give their observation. So I, being one of your favorite shareholders, I would like any new launches, products to be sent to me for testing. And I would also like to join Seeing is Believing, a factory visit if you conduct and arrange. With this, I thank you very much for patient hearing. Good luck. Good luck and happy. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much, Madam Mascarenhas and Mr. Mascarenhas. Thank you. Thank you very much for the love and affection and for the sincere expression of wishes that you have for the company. I'm really honored and really humbled by the manner in which you have spoken. I just address a few of your issues. I completely understand that as a senior citizen, the conversion of shares and dealing with it is vexating, is sometimes frustrating. I can completely empathize with it. And what I will be requesting my team, Mr. Murli and Pramod and others, to contact you to see how we can help to ensure that your physical holding of shares can be dematerialized. I think it is it is a accepted norm today, and really we will try and see how best we can help you to do it, because it is valuable. 100 shares is not a small quantum that you have got, and I think we will try and see how we can help you. Secondly, on M&A, I think on mergers and acquisitions, the growth of your company, madam, has been 100% organic growth so far. But this does not mean that the company does not look at viable and attractive opportunities, large and small, in terms of acquisitions. So we are looking at this whole space, and as and when something happens, you will definitely come to hear of it. In terms of our market share position, madam, you will be happy to know that in 7 out of the 9 categories in which the company operates in, we are by far number 1. So therefore, there is a very strong leadership position that the company enjoys. It's only in 2 categories, that is chocolates and in sauces, that we do not have the market leadership. But in most of the other categories, we have a strong market leadership. That has come out of really the trust, the quality, and the confidence that has been built over the years. On the supply chain, I think one of the consequences of the Russia-Ukraine war has clearly been on the fuel prices, and has been also on the oil prices and on the wheat prices. As you might be aware, between Ukraine and Russia, about 30% of the global supply of wheat is involved, and Ukraine is the biggest supplier of sunflower oil. So there is a huge problem as far as the oils and wheat is concerned, and because of the crude oil prices, the packaging material also is badly affected. So the inflation is certainly a big issue. What we are concerned about is not just the inflation, but also the longer term availability, because if the wheat situation does not improve substantially, there can be a global problem, especially for poorer countries. Not so much India, because we are blessed with self-sufficiency, but most of the other countries, especially in the Middle East and North Africa, will get affected because they will not have enough supplies of wheat that will be available for them. But we are watching this space, and I want to assure you that for most materials, we are well secured as a company. So we will not have issues in terms of availability as we go forward. Of course, the price inflation is something that we are very, very concerned about. And finally, madam, I thank you very much for the 6th P that you had, which actually should be the first P. I think as human beings, prayers is what we begin with. Everything else follows that. And I think, surrounding all the 5 Ps, in fact, is prayer. So I do hope and pray that you and your husband remain safe and secure, and that life is comfortable for you in Mumbai, and look forward to meeting you sometime. Thank you very much, madam. Thank you. Thank you. I now invite our next speaker member, Ms. Navneet Kaur Reen, connecting with Bhupinder Singh Reen from Delhi, having client ID number 10019630 to speak. हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है सर?
आ रही है नवनीत जी, आ रही। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह दीन हूँ और मैं आप पिछले 25 साल से आपका शेयर होल्डर हूँ। और मुझे मेरी बड़ी अच्छी किस्मत है कि मैंने आपकी जनरली सारी एजीएम अटेंड की है। जब आपसे पहले जो पेरेंट कंपनी के चेयरमैन थे वो भी आते थे, वो लोग भी, उन लोगों ने भी हमारी अच्छी प्रश्नों का अच्छा जवाब दिया। और मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि पिछले 5 साल से जो आप एजीएम अरेंज कर रहे हैं उसमें आपने शेयर होल्डर्स के सारे प्रश्नों का प्रॉपर जवाब दिया। और इस बारे में आपको मैं मुबारकबाद दोबारा देना चाहता हूँ कि जो हरिद्वार के बाबा जी ने हमारी कंपनी के अगेंस्ट जो गंदा प्रचार शुरू किया था उसका आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। और इसलिए जो पेरेंट कंपनी ने आपको हमारी कंपनी में चेयरमैन बनाया और हमारी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी जैसे रत्न दिए हैं, उससे हमें शेयर होल्डर्स को बहुत फायदा हुआ है। क्योंकि अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, जो मेन प्रश्न है मैं आपके सामने रखूंगा कि पहला तो यह है कि जो हम जो फिजिकल शेयर्स के बारे में मैडम ने अभी आपसे रिक्वेस्ट की थी, उस बारे में मैं भी आपका जो पिछले मेरे भी कुछ शेयर जो फिजिकल थे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में नेस्ले के चले गए। वो सिर्फ इसलिए चले गए कि मैंने आपका डिविडेंड नहीं जमा किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जैसे कंपनी के चेयरमैन यदि कंपनी सेक्रेटरी मतलब कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में लिखें कि भाई जो छोटे इन्वेस्टर है उनके शेयर आपने जो गलती से भी चले गए, क्योंकि मैं आपके ये जो कानून आया है वो बेनामी शेयर होल्डर्स के लिए था। इसमें जबकि हम लोग आप पुराने शेयर होल्डर्स हैं, आपकी हर एजीएम अटेंड करते हैं, हर एजीएम में पार्ट लेते हैं, उसके अलावा हमारे शेयर हो जा रहे हैं। इस बारे में एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि हमने जो डिविडेंड नहीं जमा किया है, ऐसे कई बैंक हैं जिन लोगों ने हमने डिविडेंड जमा किया उसके ऊपर सैकड़ों रुपए पेनल्टी लगाई है, क्योंकि वो उनके कोई डिसीजन होगा। मैंने अपने आप जो जमा कराए थे नेस्ले के, उसके ऊपर 1.25 लाख रुपए एचडीएफसी बैंक ने मेरे ऊपर पेनल्टी लगाई हुई है और वो केस पिछले 10 साल से बैंक के पास है। वो इसमें सिर्फ मेरे डिविडेंड ही जाते हैं, क्योंकि मेरे पास करीबन 400 कंपनी के शेयर्स हैं। जब मैं डिविडेंड जमा करता हूँ बैंक में, तो बैंक वालों ने उसके ऊपर पेनल्टी लगा के मेरे इस अकाउंट में 1.25 लाख रुपए, जबकि मेरे वहाँ पे जो डिविडेंड आया है 70,000 और उसके ऊपर 1.25 लाख रुपए उन्होंने मुझे पेनल्टी लगाई है। तो आप बताइए कि शेयर होल्डर कैसे आपका डिविडेंड जमा कर सकता है बैंक में। मेरी आपसे एक अनुरोध है कि आप कम से कम कॉर्पोरेट अफेयर कंपनी सेक्रेटरी को शेयर होल्डर्स की प्रॉब्लम बताइए और मैं आपको अपना अकाउंट नंबर भी दे दूंगा जिसमें कि उन लोगों ने पेनल्टी लगाई हुई है। इसके अलावा मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, जो आपने सीसीआर एक्टिविटीज में कोरोना के बारे में बहुत अच्छा काम किया। मैं इस संबंध में एक आपको सजेशन है कि हमारी कंपनी पिछले 100 साल से काम कर रही है और हिंदुस्तान उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, जिसमें आपने अच्छा मार्केट के शेयर कैप्चर किया हुआ है। तो सीसीआर ये जो कोरोना का है, हमारी कोरोना की बीमारी है, ये ऐसा लगता है कि अगले 20-25 साल तक चलेगी। आपके पास फंड है, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि एक जो कोरोना के लिए वैक्सीन है उसके लिए एक छोटा सा प्लांट किसी भी स्टेट में अपने सीसीआर एक्टिविटी के अंडर खोलें, जिसमें आपको यदि आपके पास फंड कम है तो आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं और बैंक से लोन लेने के बाद अगले 10-15 साल में वो धीरे धीरे सीसीआर एक्टिविटी से पैसा पेमेंट कर दें। पर इससे हमारे देश के लिए जो गरीब लोग हैं उनको बहुत फायदा होगा और इससे हमारी कंपनी का भी पब्लिसिटी अच्छी होगी पूरे हिंदुस्तान में। दूसरा वह आपसे एक सजेशन है कि आपने इस पिछले 5 साल में बहुत ही एक्सेस में प्रोडक्ट बनाए और बड़े अच्छे मार्केट में चले हैं, जिससे हमारी जो कंपनी की इनकम बढ़ी है, मतलब शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ी है। इसलिए आपसे एक सजेशन है
क्या एक, चूंकि अब भारत में लोगों की इनकम बढ़ी है तो उनको अपने स्वास्थ्य के बारे में भी कॉन्शियसनेस ना है। तो आप एक नमक जैसा छोटा सा प्रोडक्ट है, पर इसका डिमांड पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादा है। यदि हमारी क्वालिटी से कोई सॉल्ट के ऊपर आप प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका एक तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, दूसरा उससे गरीब लोगों के स्वास्थ्य बढ़ेगा, अच्छा होगा, और इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा मेरे ख्याल से। एक और प्रोडक्ट है जो आजकल मार्केट में लोगों के कैपेसिटी है जो इन्वेस्टमेंट करने मतलब खरीदने की, वो है पानी। पानी ऐसा प्रोडक्ट है पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जितने भी स्वास्थ्य के लिए कॉन्शियसनेस में लोग हैं वो खरीदना चाहते हैं। और यदि हमारी क्वालिटी है हमारी कंपनी की, यदि हम कोई पानी का प्रोडक्ट निकालते हैं, पानी वो निकालते हैं, तो एक तो डिमांड होगी और देश के लिए एक सेवा होगी। आपका एक लास्ट में आपका ये एक सजेशन है कि आप हमारी कंपनी का एक कोई पॉलिसी है कि हम लोग बोनस नहीं इशू करते, पर यदि आप अपने शेयर को स्प्लिट कर दें जिससे कंपनी का कोई फाइनेंशियली बर्डन नहीं है, पर इससे शेयर प्राइस में थोड़ा कमी आएगी, लोगों की शेयर होल्डर्स खरीदने में और इसका मार्केट वैल्यू बढ़ने में बहुत जल्दी एक्शन होगा। और इस काम में शेयर कंपनी का कोई खर्चा नहीं है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आप मेरे जो सजेशन है, एक मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ जो आपने हमारे लिए किया है, तो इन्वेस्टर के लिए आप ये जरूर आप कंपनी सेक्रेटरी मतलब कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज को जरूर चिट्ठी लिखें, जैसे कि हमारे जो शेयर फालतू जा रहे हैं इन्वेस्टर फंड में, जबकि हम पार्टिसिपेट करते हैं हर चीज में। इस संबंध में आप जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद भूपेंद्र सिंह जी। आपने आपके जो प्रश्न है और आपकी जो कंपनी के लिए शब्द है, मैं आभारी हूं आपसे कि आपने अपना वक्त निकाला और आपने अपने सजेशंस, बहुमूल्य सजेशंस काफ़ी कुछ दिए आपने। जो पॉइंट आपने कॉर्पोरेट अफेयर्स की और कंपनी अफेयर्स की के बारे में बात की, वो मेरी टीम को मैं रेफर करूंगा कि वो आगे जाके किस प्रकार से मदद कर सकें, वो आपको बतलाएंगे। लेकिन ये तो जैसे आप जानते हैं कि बड़ा लंबा वक्त लगता है इन चीज़ों पे। सरकारी मामलों पे कोई चीज़ तुरंत तो होती नहीं है, लेकिन इतना मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप जैसे शेयर होल्डर्स को हम मदद कर सकें। जो भी तकलीफ आपको इन चीज़ों में, शेयर्स में हो या उसके डिविडेंड्स के रेमिटेंस में हो या जिस भी प्रकार की जो तकलीफें आपको इसमें हो। कोविड पे आपने सजेशन किया कि आप वैक्सीन क्यों नहीं बनाते। एक बात आपसे कहना चाहूँगा भूपेंद्र सिंह जी कि जो हमारी जो CSR की जो खर्चा हुआ है पिछले साल, 40% इसका जो केवल कोविड पे गया है। और कोविड पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो हमने देखी भूपेंद्र सिंह जी, वो खाने के लिए और ग्रोसरी आइटम्स के लिए लोग कई प्रांतों में भूख और घर चलाने के लिए जो पदार्थ चाहिए थे, इसकी डिमांड सबसे ज्यादा थी और इसी पर हमने बल दिया है। कई NGO हमारे साथ काम करते हैं खाना परोसने के लिए, क्योंकि भूख जो है ये बहुत ही बड़ी समस्या है इस कोविड में। और अक्सर इसके अलावा हमने 5 या 6 जगहों में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हमारी जो सेकेंड वेव आई थी तो उसमें कई लोग तड़प के मरे क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिली थी। तो हमने कहा कि भाई हमारे कंपनी के तौर पे हम क्या कर सकते हैं इस पे, तो हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाई है। तो हम वो चीज करेंगे भूपेंद्र सिंह जी जैसे आपने कहा, लेकिन जहां कंपनी की क्षमता हो। हमारी कंपनी जो फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, हमें कोई वैक्सीन में कोई जानकारी है, न कोई इस पे कोई हमारी एक्सपर्टीज है, लेकिन बाकी चीजों में जैसे इम्यूनाइज फूड है, ऑक्सीजन प्लांट है, खाना है, ग्रोसरी किट्स है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स हर घर में यूज होते हैं, तो इन चीजों पे हम जरूर अमल करेंगे। आपके जो नए प्रोडक्ट्स के सजेशंस हैं उस पर भी गौर फरमाएंगे। आपने पानी के बारे में कहा और बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में कहा। और बोनस या स्प्लिट करने की बात जो है भूपेंद्र सिंह जी, आप जैसे कई शेयर होल्डर ने इसकी सजेशन दी है, सजेशन हम लेते हैं और इस पर गौर फरमा के हम किस प्रकार इस पे हम एक्शन ले सकते हैं,
आपको बतलाएंगे। लेकिन आपका जो जो जी का जो सहानुभूति है और आपका जो प्रेम और जो विश्वास हमारे कंपनी पे है और अटूट विश्वास जो है, उसके लिए मैं आभारी हूं। और यही इच्छा होगी कि आप और आपकी फैमिली सुखी रहे और सेफ रहे। धन्यवाद। Thank you. I now invite our next speaker member, Mr. Yashpal Chopra from Delhi, having client ID number 105925558 to speak. Ajit? यशपाल जी अनम्यूट कीजिए। Mr. Chopra, can you please unmute your microphone from your device? Am I unmuted now? Yes, yes, sir. Honorable Chairman, sir, and the eminent Board of Directors, to begin with, I must congratulate you all for the grand performance of the company. I say grand, though it is not grand, it is just satisfactory. But because of circumstances under which it has come out with the performance and come out with a nice dividend, I would just say that our dedication, our intelligence, our strategies, those are worth praising. So I'm proud of you, sir. So you have given exhaustive speech. The speeches are never beautiful. Those should be exhaustive and those should be informative. So you have given a speech like that. I am very much convinced with that. So the next to proceed with, the last 2 years were COVID infected economy, and there was very big problem worldwide, and our country was not any exception. And still we did a marvelous job. So that is a matter of pride, sir. But sir, the current year, that is worrying me most, because this is the crude infected year, and because of the crude, the input cost of all your products, from the manufacturing to the last man, delivery man, everything will be higher, costing you. There will be rise in the input cost, and at that stage, it shall be really very difficult for you to sell off your products with the same margin, because if the margin gets squeezed and you don't get the profit, so there's no fun of going for such business. So, sir, you just devise something just to ward off that problem, because that problem is not a problem for a day, because so long the war is going on between Ukraine and Russia, and there is a crunch of supply of these crude problems and all that. So these problems we will have to face, and for that you have to have some bold strategy. And sir, the next thing which is very important, you cannot afford to ignore, that is our Baba Ramdev ji, who is coming up with Patanjali Foods, and he is introducing so many items day in, day out, and there is no channel. You open any channel on the TV, you will find him selling Dant Kranti or selling Cash Kranti, or something else. He has entered in almost all the areas of our daily needs. And sir, being a health ambassador and yoga ambassador, every day he is criticizing the consumption of maida. He is criticizing the consumption of coffee and tea. He is criticizing the consumption of chocolates and all that. And sir, as regards our company, the main product by which our company is known is Maggi, Nescafe, and chocolates. I just tell you, if you have a survey among your own shareholders, you will find that 90% of that, they know only these three items. They don't know any other item, because these are the three main items which are your bread earner. These are the three main items which are getting the maximum revenue for the company. So I would request your R&D department to just make research on other millets,
oats and other products which are health, helpful, which cannot be criticized by the world over because now the people are very much health conscious. So under those circumstances, it looks very, very difficult. And sir, in the last time, I had given suggestion on the revamping of your PR department that because on every daily soap, there are so many soaps, mostly that from Sony and all that, who are involving our audience. Every day the people are sticking to that and those. And over there, our Babaji's product come as a hamper and all that, but our Nestle is not seen anywhere. So that suggestion I will not repeat because my own son, who has been ex-KPMG business head, he is having his own company. He has spoken to me in so many things, so many times. Papa, that free advice, free suggestion, and free advisors are never respected, and those suggestions are never accepted. Only that doctor who charges the maximum consultation fees, only he is respected. So it is better you don't go for that. But because it is my own company, and I am a person of 19th century, I'm not that of the 20th century. So when I feel it is my company, I can't help it. I think over what is best for my company, and then I put forward those suggestions. So, sir, so this time my suggestion is that you have to revamp your marketing team. Your marketing division has to work up. They must work out the new strategies just to demonstrate our products, just to educate our consumers. And I tell you, sir, for that, to begin with, as it is said, the charity begins from home. To begin with, you should have a consumer conference in almost all the metro cities of our country, where you can invite your own shareholders residing, living in that area and all that. And with the mobile exhibition of your production and all that, you just convince them, and you should give them the loyalty coupons that you will just go so that once they develop the taste of our own products, our own men, definitely that will give a big, big, big message. Because, sir, you can't afford to take Baba Ramdev lightly now. This is a 2 rupees share of soya, which that ailing company has purchased the share at rupees 4 only. This he has now been says the face value 2 rupees share is being sold at 1,000 rupees, and now the name has been changed to Patanjali Foods because he is introducing so many other food items in that. So you cannot afford to ignore that. So you have to be cautious, and you have to revamp your marketing strategies. So on these strategies, I can speak a lot, but because I don't want to speak in the open and all that, once given me a chance to meet, I will definitely come forward with some suggestions and all that. Yeah. To proceed further, I want to address to Mr. Murli. He is retiring after conducting 25 AGMs. And I'm, after my post-retirement, this is my 25th year. And for the last 30 years, I'm with your company since the time when the company was holding its AGM at Kamani Auditorium and Fiki and all that thing. And the matter of, I can say that so far, even in the 30 years, I tried my best to get a direct number of Mr. Murali. I could not get it. And I know even no shareholder has ever got his direct number. Because I can say that he, and still he is popular, though he is having no personal contact with any shareholder like that. Still he is popular, and I wish him best of retired life, because it is not retired, it is retired life, which I am enjoying for the last 25 years after my retirement in April 1997 from Indian Oil. Sir, I must
compliment our corporate department under Mr. Gagan Aryaji and Mr. Sushant Singh ji. Last year I had spoken on the loss of Mr. Rajendra Agrawal. I know that loss is so far not repaired. So far that loss has not been compensated. But still, the way Mr. Prashant Singh is doing it, he has won over the heart of so many shareholders. Whenever anybody goes to his office, he is just treating him just with a cup of Nescafe, just with a glass of butter, and people value that very much. That the man has treated him, and he is very prompt in attending to the queries and all that. So at this time, one of my suggestion is that you should have a full-time person, officer above Mr. Prashant, not the man with the additional charge and all that, because the interest of the investors, that is very, very important, because the investors' blessings, that is the real strength of the company. Earlier, our AGM was the Maha Utsav. If the people would wait for that Utsav, wait for that festival, and they would go there and they would cherish that, they would enjoy that. Now they know it is a formality provided by MCA. But a person like me, at the age of 83, even then I am very much obliged to MCA, and I would like that attending physical meeting at such age is a really, really very difficult task. And even those persons like Mr. Sharaf from Calcutta and Rangwala from Bombay and all that, even those people cannot attend. So if we are going for physical meeting, we must have some system along with that where we can express our views, our suggestions, because I think being a co-partner of the company, we also deserve a right to put forward our suggestions. So, sir, thank you. In the end, I will pray Almighty to bestow positivity on you all, from the top to the last man in our company. So that positivity means the strength of the company, and the strength of the company means strength of our investment, strength of my investment. I know that I will now, this year, last year I have spoken a lot about split bonus and right and all those things. This year I am not going to touch those things because most of my friends have spoken on that. So I am not, I'm a person with not a reputation. I don't want to create a reputation. My main worry is the marketing strategies you have taken in view of the problems hovering over our company. So that is my worry and that is my concern. So best of luck to you, sir. So we are very much proud of you. You are handling the company like anything for the last so many years. So thank you, sir. Thank you. Best Thank of you. Thank you, Yashwalji. It's always a real pleasure and an honor for me to listen to you. And I think I respect your son's advice, but I think your son said it to the wrong person. Your wisdom, your perspective, and your honesty of purpose is probably far more valuable than any advice a consultant can give to an organization. And like an elder member of the family, you give compliment, but you also give scope for improvement. So I can see that the 19th, 20th century discipline that you bring to chastising your younger people to do better is clearly there. So I am deeply grateful, Mr. Chopra, for your kind words. I think you are absolutely right. Just to answer, to respond to a few of your points, the input costs, the crude costs, and the inflation is probably going to be the biggest challenge that we are going to face as a company. I think you are absolutely right. We have strategies in place how to manage the portfolio, and we will try and manage the balance between growth and profitability in the very difficult circumstance. I want to assure you, Mr. Chopra, and you mentioned this before, we don't take competition lightly. Competition inspires us. Competition does not make us complacent. So
5-6 years ago, 7 years ago, you recall that we had a big crisis that was on the company. We came out of it. We came out of it stronger, and we were able to, with the help and support of all of you as shareholders and also the dedicated employees and partners of this company, rise above the clouds and become a high-performing company. As I speak to you, some of the suggestions that you have given on looking at different R&D products is already being worked on. You'll be happy to know that some of the ideas that you've given on millets, on oats, on various other ancient grains is part of the work that the company is working on in order to improve even more the quality of nutrition that we have to offer. I want to assure you that under my watch, Mr. Chopra, we will never take competition lightly. We will not allow ourselves to be lulled into complacency. You will see more actions coming out of the company. You will see more initiatives, but we do this in an ethical, honest way. That's what we are as a company. I cannot change the DNA of the company. The DNA of the company is honesty, sincerity, and trustworthiness, and that's not something that we will ever compromise with. But we have the power of nutrition, of science, and technology to be able to make the responses that we do. So I want to give you that assurance, Mr. Chopra, and I thank you very much for your very, very kind words. Also, your kind words for Mr. Murali, who has been an institution in this company. I don't think there are too many company secretaries who would have presided over 25 AGMs. So I think he will probably go in the Guinness Book of Records, if there is one, to look at the number of AGMs that he has handled. But thank you very much, Mr. Chopra. I deeply appreciate all the suggestions you have given, and also the firm but very pointed signal that you have given that competition is around the corner. Don't take it lightly, and the message is very well received. Thank you, Mr. Chopra. Thank you very much, and keep safe. Thank you. I now invite our next speaker member, Mrs. Sashikant Gajanan Marathe from Pune, having client ID number 1201 0900 1630 8696 to speak. I'm sorry, Mr. Marathe, we are unable to hear you. So can you please adjust your microphone? Mr. Marathe, we're still unable to hear you. Maybe we can just check your connection at the back end and rejoin you. We'll just check your connection at the back end and rejoin you. Thank you. In the meanwhile, we'll move to our next speaker member, Mr. Krishan Lal Chadda, having client ID number 1201 410000 10073 to speak. Please proceed. Thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity. Can you hear me? Kindly speak a little louder, Mr. Chadda. Can't hear you very well. Thank you, sir. I can speak loudly. Sir, thank you to giving me the opportunity on this portal. Sir, on the page number 23, I am very thankful to the management to take a good initiative to reduce the energy usage or usage of waste water usage. सर बट मैं देखना चाह रहा था कि आप 2006 से 2021 का अपना क्राइटेरिया तो दिया हुआ है इसके अंदर कि -43%, -67% और 52% दिया है ऑन द पेज नंबर 23, बट सर आपने 2020 और 2021 का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, जबकि आपको एनुअल रिपोर्ट में मेरे ख्याल से वो भी देना चाहिए था। सर जहां तक मैं अपने पहले पूर्व प्रवक्ता से शेयर होल्डर के साथ सहमत हूं कि अगर हम इस पोर्टल पे शेयर होल्डर का जो है डीपीआईडी क्लाइंट आईडी ना शेयर करें, मैं आपसे इस बात के लिए भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। सर एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑन दी पेज नंबर 28 जहां तक हमने प्लास्टिक की रिड्यूस की है अपनी पैकेजिंग को करने के लिए 8% की, इसको हम आगे और घटाने के लिए क्या और इनिशिएटिव कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। जहां तक सर हम अपने कॉफी प्रोडक्ट को लेके बात करते हैं, सर एवरी
इन दी सीजन ऑफ दी सर जब सर्दी का मौसम आता है तब हम अपने छोटे पाउच की पैकिंग की जो कॉफी की बात करते हैं 2 रुपए की पैकेजिंग की, सर उसकी हमेशा मार्केट में अवेलेबिलिटी कम रहती है और बड़ी पैकेजिंग की अवेलेबिलिटी है वो मार्केट में ज्यादा रहती है। तो हम उस शॉर्टेज को हमेशा बना कर क्यों रखते हैं मार्केट में, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से प्रॉपर वे में मैनेज क्यों नहीं करते, या जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप है मैनेज क्यों नहीं कर पाते। जहां तक हम अपने सूप्स के बारे में बात करते हैं उसको सर हम ज्यादातर देखते हैं कि मॉल्स के अंदर हमारे जो सूप्स हैं उसके ऊपर 2+1 का ऑफर लगा होता है। तो हम इनिशिएटिव लेते हैं बजाय कि ऑफर्स देने के बजाय हम अपने प्राइस को ही क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पाते कि हम जो मॉल्स के ऊपर जो हमारे सूप्स हैं उनके ऊपर ऑफर्स लगे होते हैं। हार्डली इस साल भी 2+1 का ऑफर कई जगह देखने को मिला। हम अपने जो प्राइस है उसको ही क्यों नहीं कंट्रोल करते ताकि जो जनरल कस्टमर है उस तक सही प्राइस में ही हमारी प्रोडक्टिविटी पहुंच पाए। जहां तक मैं सेल्स की बात करता हूँ, इस साल सर हमने 1,46,337 मिलियन का बिजनेस किया है, जो कि लास्ट ईयर 1,32,902 मिलियन के अकॉर्डिंगली 10% काफी अच्छा ग्रोथ कर दिखा चुके हैं। ईपीएस की वो उसके अंदर उस तरीके की वोलेटाइल हमें डिविडेंड की तरीके से उसमें आपने ग्रोथ नहीं दी है। जहां तक सर मैं पेज नंबर 43 पे बात करता हूँ, मेरी क्वेश्चन ये है सर कि अदर सर इस साल हमारी 1201 मिलियन रह गई है जो कि लास्ट ईयर 1458 मिलियन थी। इसका घटने का जो रीजन है थोड़ा सा इस पे आप बताएंगे कि ये क्यों घट गई है इतनी ज्यादा। जहां तक एक्सेप्शनल आइटम है सर वो पेज नंबर 43 पे ही 2365 मिलियन से घट के जो लास्ट ईयर जो थी वो नील थी, इस साल हमने 2365 मिलियन शो की है। इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। और सर मेरे कुछ लास्ट ईयर के पॉइंट्स ऑफ व्यू भी थे जिसके लिए अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन आपके सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट से आज तक नहीं आई है, तो थोड़ा सा आप उन्हें कहें कि जो लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन थे उसकी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है और कोशिश करें कि इस साल की जो क्वेरी है वो भी क्लैरिफाई कर दें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you, Mr. Chadha. I will choose to answer some of your questions in English because some of them I will be requesting one of my colleagues to answer you. Firstly, on the greenhouse gas emissions, energy usage, etc. 2 points have been given: 2006 and 2021. The reduction has been in the last 15 years. So that is the number. So minus 57 is greenhouse gases, minus 43 is energy, minus 52 is water usage, and minus 67 is wastewater generation. That is completely in consonant with the annual report, which is a 2021 report. So from 2006 till 2021, that information has been given. The second point you're talking about is on plastics. In answer to earlier shareholder question, we had indicated that we have got almost a 9% reduction in plastics. One of the areas that we are looking at is there is globally with us a Nestlé Packaging Institute, which has been set up in Switzerland, whose services and whose output Nestlé India is also a beneficiary of. There we are working on solutions that will be non-plastic, but which are commercially viable. So this is the work that is being done so that we are able to accelerate the quantum of the plastic reduction over a period of time. This is a constant journey that we will be, I can assure you that there will be a fair amount of energy and focus as far as this is concerned. The third point, before I pass on the floor to my colleague, Mr. David McDaniel, the CFO of the company, just to correct you, Mr. Chadha, with all respect, the company does not make soups anymore. So I don't know what soups you have seen in which stall. Maggi soups are no longer available. So the question of giving buy one get one free offer or by trying to control the price does not arise, because if I'm not mistaken, almost 6-7 years ago, we have stopped these products. So some other soups probably that you have seen that might be giving you that confusion. Now the specific question which I will pass on to Mr. David McDaniel. The question is, David, regarding the exceptional charge that has been taken on the P&L for 2021. What is it and what is the nature of this?
you might like to explain to Mr. Chadha. Yeah, thank you, Suresh, and thank you very much for the question, Mr. Chadha. So the exceptional charge is a one-time charge. It's simply put, it consists of two elements. One element is the actuarial valuation of the past service cost for current employees who were subject to this scheme, the Future Ready Plan. And the difference between that actuarial valuation and the amount booked in our books for their past service. So there was a small delta, or there was not small, but there was a delta for that. And the other element is the settlement cost, what we call the settlement cost. Again, it's a difference between the cost agreed with the future service provider compared to the obligation in our books for pensioners. So two cohorts that we transitioned into the Future Ready Plan. One, some of the current employees, and one, the pensioners. And the total cost is the delta in each case, the price of transferring to the insurance provider versus what was already in our books. Thank you. Thank you. We go to the next speaker. Thank you. I now invite our next speaker member, Mr. Sashikant Marathe. I, Sashikant Marathe of Pune, wish good morning, good afternoon to all those at virtual AGM. Sir, I am pleased to note that the balance sheet is concise as well as gives all statutory obligations. The two interim dividends of rupees 135 on equity shares of rupees 10. Our notice to have given details of the proposed final dividend under explanatory statement giving item 2 of the notice. Please ensure this in the next time. Final dividend of rupees 65, if approved, will make the total dividend of rupees 200 per share of rupees 10. This is out of total earnings of 222.50 per share. The results are encouraging against pandemic, and the board and employees deserve our sincere appreciation for the excellent results, which are a record on the decade. The key financial ratios, barring operating profit margins, have tapered. We appreciate your efforts for continuous progress on environment sustainability. The contributors of 9 different awards and recognition deserves our heartfelt appreciation. I suggest those who helped us should be rewarded suitably. Your strategy for reducing use of plastic and use of non-conventional energies are up. From an investor as well as resident Indian, I have few observations for the board of directors. From next time, try to have AGM beyond trading hours. We are at 9 locations producing our products. We ought to explore space on roof as well as the areas within our factories for tapping solar energy. Now our units which install, operate and charge for use of power at reduced rate than we pay now. The tariff on power are bound to increase due to Russian invasion. Oil prices will rise unabated. The sunshine cannot be reduced, and we must explore this fully and even will the extra energy to the state grid. With efforts for increased digital tools, usage as well as innovative efforts for productivity increases, it is noted that our employee strength rose by 902 numbers. As a socially responsible entity, the manpower policies need a relook as against 7910 permanent employees. We do employ 8,878 hired contract employees, which constitute 112% of permanent strength. Central Act on Abolition and Regulation of Contract Labor need to be read and implemented in its spirit.
R&D expenses are just 0.26% of our income. Though to spend more than in their countries. It was jokingly said that the directors do continue on the board as long as they tune in to their promoters' wishes, ideas. Due to Russian advances, the cost in euro is bound to increase, and it is appropriate for our board and its chairman to study and prepare the cost-benefit ratio in that in the present unfavorable environment in Europe. It will be beneficial to start R&D activities in India. There are ample talented individuals to make R&D more rewarding and aim at R&D as a green field in India, as many MNCs have facilities in India. Nestlé is a drain on India's foreign exchange. As we import rest net of exports 18,247 millions. Kindly persuade our promoters to invest in India and reap more by following Make in India. Noted the company has transferred to IEPF a sum of 94,805 millions as unclaimed dividend. It is not enough to appeal shareholders to claim unpaid dividend, as most of them might not be able to read our directions and are having physical shares, wherein KYC is not linked. One must explore ways and legal means to call for a surrender of shares in hard format from concerned shareholders and pay them after footing the cost of consolidation and related expenses. Please do not neglect shareholders who have contributed capital. Women constitute 14% of our strength. In CRISIL, this is 37%, and 30% of managerial positions are manned by women in 38. On our board, we have hardly 33.33%. Please ensure. Hello. Hope the company has taken all employees in confidence for the scheme of arrangement, page 36. Please send a copy or gist of the item and details under section 197 of the Companies Act. Thank you for giving me time. I thought that you would answer all the speakers at the end, but some or other you changed. One should have 3 minutes time for each. I think I have not taken more than 4 minutes. Thank you very much. Thank you, Mr. Marathe. Thank you very much for your comments and for your suggestions. What I will do is, in the interest of fairness and also respect, you had sent these questions in advance, so I will very quickly run through some of the answers on the questions, so that you have clarity on where the company stands. The first one you talked about was the strategy on reducing carbon footprints, reducing use of plastics and non-conventional energy. I think in my earlier responses to shareholders, we have talked about both recyclability as a key imperative for the company, also the usage of alternative materials and optimizing our pack sizes. We have also, interestingly, Mr. Marathe, started using recycled content in outer shrink film for coffee trays. That's one of the things that we have started in order, and also in all our premia, that is what we use to give as gifts along with our main brands. We have shifted to glass and metal options and actively pursued not having any plastic as far as the gift items are concerned. You talked about the 9 locations where we are producing, and you talked about exploring the roof areas for tapping the solar energy, especially in the context of the war and the heightened prices of oil. First of all, we are pleased, Mr. Marathi, you'll be happy to know that in the Sanand factory that has been set up, it is the most environmentally friendly factory, 100% clean and renewable for the thermal energy.
and 26% of our electrical energy is contracted with wind and solar hybrid. That is the maximum that is being currently allowed by the state, and we are going to the maximum. Having said this, we are also seriously exploring on-site possibilities to further enhance the net zero commitment on the solar roof, which is one of the options that we are actively considering. You talked about efforts on increasing the digital tools usage as also innovative efforts for productivity increases. And you talked about the employee strength having gone up by 902 numbers in the decade gone by, as probably an extra number that we could have avoided. I think I would just like to mention to you that during the last decade, since 2012, the production volume of the company has grown by nearly 25%. This period has also seen capital expansion across locations. Two new greenfield sites in Taliwal in Himachal and Sanand came up in 2012 and 2021. In addition, greyfield projects were implemented in Moga for the Nestlé Health Science business, in Samalkha for the milks and nutrition business, in Ponda for the chocolates business, in Nanjangud for the coffee business, in Bicholim for the noodles business. All of this clearly would mean an augmentation of the workforce, which is what we have tried to do. In addition, in order to exploit more the opportunities in the nutrition space, we have added about 300 people since 2012 to be able to cover the healthcare professionals in a more concerted and in a more complete manner. I think those are some of the initiatives that have been done, and which is why the labor numbers are increasing. It's also good, Mr. Marathe, for the country because we are creating direct employment. And as you know, and as you would agree, that employment is one of the big challenges that the country also faces. You also talked about social responsibility in terms of 7,910 permanent employees against 8,878 contract employees, and also the need for adherence to the Central Act on abolition and regulation of contract labor. I would like to assure you, Mr. Marathe, that the contractors deployed at all our sites are fully compliant to the Contract Labor Regulation and Abolition Act. Without that, not a single contract labor is being employed by us. About a quarter of the contractual employees are actually in ancillary duties like housekeeping, security, canteen services, etc. Another quarter is deployed in our warehouses for the distribution network, forklift operations. These activities are not primary in nature to the manufacturing organization, and therefore have been outsourced. I would like to assure you that the remaining contractual workers are mainly deployed in our factories in the end of line in secondary packaging, which are also being regulated as per the prescribed Contract Labor Regulation and Abolition Act. So therefore, I would like to assure you that on this, the principles being followed are ethical, honest, and completely compliant. And we would not be doing anything that is outside of this. You talked about the transfer to the IEPF, a sum of 94 lakhs 80,540 as unclaimed dividend. You talked about the fact that it is not enough to appeal to shareholders to claim unpaid, as most of them might not be able to read our instructions. I think some of those questions have already been raised in today's AGM, which we will look at. In terms of requirements, I think all the necessary notices in newspapers and the company sending out regular reminders in advance to all those shareholders on the transfer of shares to IEPF is being done. However, if there are ways in which this can be strengthened, we certainly will look at it. You talked about diversity, saying that in some organizations like CRISIL, for example, there are 37% of women employees and 30% in managerial positions. We are at 14% as an overall organization, if you include the entire workforce. The area where, Mr. Marathe, we are looking at progress is in manufacturing. That is where, with Sanand, with 65% of the workforce being women, we have taken the first important step, and I do hope that this becomes then easier for us to accept a larger number of women in the manufacturing workforce. However, on the white collar, 24% of our white collar are women, and these are comparable to what you have in
companies like CRISIL or others, which are largely white collar employees and not really the kind of blue collar workers that we're talking about. We also have the highest representation of women in the field force at about 21%. This is an area that is not just tokenism, but a leadership imperative. And I think we will be moving faster in this direction and more aggressive in the direction of increasing diversity and also enabling mentorship programs, leadership development programs in order to enable the greater participation of women in the workforce. You talked about the gist and in the confidence for the scheme of arrangement, page 36. Can I get a gist? Can you get a gist of it? I would just like to read it out to you. The Board of Directors at the meeting held on 28 July 2021 had approved the scheme of arrangement under the Companies Act 2013 between the company and its shareholders for the transfer of balance of general reserve to the retained earnings. The same is made publicly announced immediately after the board meeting. No employee is directly affected by the scheme, so I would like to assure you on that. You talked about aiming at zero emission by 2029. I think carbon emission reduction has been implemented or is being implemented as far as our packaging is concerned. Material supplies like tree plantation, reuse of solvents in printing, reduction of water and electricity charges, usage of solar panels, etc., in order to reduce the carbon emissions. You talked about we are not ethical in spirit as our disputed unpaid statutory dues net of amount paid under protest is 10752.4 million as against our paid equity of 964.2 million. The disputed statutory dues are on account of various demands raised by the tax authorities for direct and indirect tax matters, which have been disputed by your company in various courts of law. And that's why they are coming as provisions. In most cases, these demands have been stayed by various courts of law and hence remain unpaid. So the question is not one of being unethical about it. The question is final settlement of the matters that you would appreciate. We will have to wait through the due diligence of the law before we settle these matters. With this, Mr. Marathe, I hope I have satisfactorily answered the questions that you had posed. And I thank you very much for your taking the trouble and for putting down these questions. It is important that as shareholders, you ask the questions that concern you, and it is my responsibility as the chairman and managing director to answer them as best as I can. If there are any further gaps, I'm quite happy to indulge and engage in order to answer them further. But thank you very much, Mr. Marathe. Do appreciate your questions. Thank you. I now invite our next speaker member, Mr. Manoj Kumar Gupta from Kolkata, having client ID number 1121-8986 to speak. Hello, good afternoon, respected Chairman, Board of Directors, fellow shareholders. My name is Manoj Kumar Gupta. I am equity shareholder of Nestlé India Limited. Sir, I am attending this meeting after 23 years. When Mr. Murli had joined as a company secretary with the Mr. L. Vishwanath, at that time I have attended this Nestlé AGM in the Air Force Auditorium. After that, I say namaskar to R.V. Kanodia sahab that we always find that one person from Calcutta in the Nestlé board. We feel proud that earlier Mr. B.M. Khetan in the board and now Mr. Kanodia is in the board from Calcutta. So we feel proud that peoples of Calcutta, that one person from Calcutta is in the board of like Nestlé company. 9 years back when the problem has started with Maggi, we had discussed with out of the AGM of Kanodia Chemicals with Mr. Kanodia, and he assured us that problem will be resolved out. Don't worry, everything will be sorted out. So such type of peoples are there that they can assure the investors, small investors, that this is the and that was the totally political motivated. And earlier speaker says Baba Ramdev. Today Baba Ramdev says I am going to change the name of the company from Ruchi Soya to Patanjali products. So what he will do,
कि वो कवि कवि कहते हैं कुमार विश्वास की बाबा जी योगा कराते कराते लोग योग करने लगे और बाबा जी बिजनेस करने लगे। कुमार विश्वास कहते हैं अपने कवि सम्मेलन में कि बाबा जी ने दुनिया से 25 साल का योग करो, और जब दुनिया योग करने लगी तो बाबा जी अपना काम धंधा लेके बैठ गए और सब चीज बेचने लगे। जो एमएनसी बेचती थी वो सारी चीज बेचने लगे कि एमएनसी को भगाना है। एक भी एमएनसी नहीं भागी, बट बाबा जी ने पॉलिटिकल मोटिवेटेड में कंपनियां खरीद ली। तो इस तरह का हमारा सिस्टम है, इस तरह का वो है कि जो बाबा जी योग कराते थे आज वो बिजनेस चला रहे। एनीवे दैट्स इट। एंड रिस्पेक्टेड चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, thanks to you that you have given a chance to us and to join this meeting from Calcutta, and this all credit goes to the MCA that who has allowed the corporate sector to hold the AGM through VC, and thanks to your company secretary and his team that who has given a chance to speak. But I'd never meet Mr. Murli. I tried 4 years back in Gurgaon at your office. He says one junior to meet me downstairs. You go and meet him. What's his problem? Then I says that junior that I have no problem. That's just I want to meet him, and I want to a copy of balance sheet. Then he's after waiting half an hour, he come again to give me a balance sheet, and he says Mr. Murli is busy. He could not meet you. But anyway, I pray to God for his healthy and prosperous, safe, long life after retirement. And he's the in my life in 32 years, I have seen 2 or 3 companies secretaries like BB Chatterjee in ITC, Mr. Murli in Nestlé, and one person in another company who has completed 25 years continue as a company secretary. So I wish to God for his healthy and prosperous, safe, long life. And sir, there is A, B, C, D, E, F, G for the investors. A for appreciation is there. B for bonus is not there. And I will not suggest you that issue the bonus. You can issue the bonus debenture. The equity will not increase, but bonus debenture at the rate of 8% or 8.5% you can issue. Like as firstly in India, Hindustan Unilever has issued the bonus debenture. Then Dr. Reddy, then G, and now the Britannia. Britannia has issued continuously 3 years bonus debenture in the ratio of 1:1. So you can also consider in the bonus. C for convertible debenture, you don't need any money, that we will issue the bonus convertible debenture. D for dividend, you are paying the excellent dividend of 200 rupees. That means you are paying the 3000 crore rupees dividend, include taxes. And sir, E for earning per share is your good. F for factory visit, I don't think that you will allow the factory visit. G for gift, gift is totally banned by the MCA, that you can't issue the gift to the any investors. And sir, श्रीलंका इज हमारा पड़ोसी है और उसमें इतनी उठा पटक हो रही है, तो उससे हमारा क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उसको हमके ऊपर बहुत अच्छी तरह से नजर रखनी चाहिए. एंड सर, single use plastic usage, we have reduced to use the single use plastic by 8.5%. Recently in the parliament session, before last day of the session, our environment minister says we totally completely ban of single use plastic by 5th July, from 5th July 2022. No one can use the single use plastic from 5th July 2022. They have issued that. Why he says in his in total the clarification, he says to the honorable speaker of the house, why I am saying 5th July, that before that people can use their products, people can use their stock in the market, so that after that they can't use the single use plastic, that is unfriendly, unhealthy. So what is your view, sir? How you will face after 5th July, when the government will issue a notification to completely ban of the single use plastic? And sir, today 2 lady directors will retire, and I will suggest 1 lady director should be a whole time director in the board, either a finance director, marketing director, or research and development director. Bring 1 competent lady director as a whole time director under your leadership. When you become the chairman before 5 years, we feel proud that after a long time, Nestle has got an Indian man as chairman of the company. Earlier, I find that every time a foreigner were the chairman of the company. And so, how you will face a competition from Amul and Patanjali? Amul is always nowadays launching 2 or 3 products after every quarter. Recently, Amul has launched some soft drinks.
to compete with Pepsi and Coca-Cola. So how you will, and now they are launching cookie, chocolates, and ghee and other things. How you will face this competition? Patanjali, my previous speakers has already discussed about the Baba, so I will not say about the Baba. And the spices, how you will face a competition from Tata and ITC. Recently, ITC has acquired the Sunrise of Eastern Grove for, at the price of 2,200 crore rupees. And Tata has launched Sampan brand, and people know the name of Tatas, people know the name of culture of Tatas, so people will like to buy the product of Tatas. So how you will face that competition from ITC and Tatas in your spices? And sir, have you any plan to bring any greenfield project or any takeover acquisition in the eastern part or northeastern part of the country? Because both part is growing. When the NDA has come in the northeast, in like Assam, Tripura, Meghalaya, now you see the picture of how the Assam has changed now in last 7 years. So what is your view, sir? And sir, CSR, and sir, Mr. Kanodia knows that I do some social work in Calcutta, and we runs 3 hospitals. And sir, try to reduce and ask the government to reduce your product of lactogene to give some relief to the middle class and the lower people, that they can buy the lactogene 1, lactogene 0, lactogene 1, 2 for their newly born babies. Or you can launch some small packs of 50 rupees, 100 rupees in the lactogene 0, 1, 2, that people can afford that to buy. And in the CSR you can distribute some last to after where such product will expire 3 months back, that you can distribute under the CSR to some hospitals to give that products to the newly born babies parents, that they can give that product to their babies, like a Johnson distributing a baby oil and baby soap to the hospitals of the short expiry, which product will expire 3-4 months back, that they are giving. So you can also consider under your CSR policy. And sir, I totally agree with Mr. संतोष श्राव कि आपने प्राइस तो बढ़ाया, बट चीजों का साइज भी घटा दिया. इन पोलो, आई एम हैबिचुएट टू यूज योर पोलो, बट आपने सर पोलो का साइज पूरा 10 रुपए का पूरा ऐसा कर दिया, 5 रुपए वाला, 5 रुपए वाला 2 रुपए वाला कर दिया. तो थिंक अबाउट दैट कि पोलो शुड बी a previous, people can get like as previous one. And lastly, but I support your all motions, and I thanks to you, and I always namaskar to RB Kanodia sahab, that we feel proud always that he's in the board. And once again I convey my thanks to Mr. Murli for his contribute his vast experience in this company. Thank you, sir. Thank you, Manojji. Thank you very much for your very kind words, not just on the company, but also on our respected and esteemed director, Mr. Rajavardhan Kanoria, and also for your kind words for Mr. Murli, whom I hope that you will get to see someday when he doesn't have the responsibility of being the company secretary of the company. Your suggestions on various options of bonus debenture, convertible debentures, etc., is all taken on board as suggestions, and I think nearer the time we can discuss as to what is the most relevant way of rewarding the shareholders. On single-use plastic, you'll be happy to know, Mr. Manoj, that Nestle is the first company, and I repeat, it's the first company to shift to paper straws completely. 30 million straws, plastic single-use straws, have been removed. We are complying with it even before the date of regulation is being mandated by the government. So I think this is an area. Most of our other packaging are either monolayer or multi-layer packaging, where work is on in terms of reducing the plastic footprint. But on the single-use plastic, I think the company has already taken proactive steps and doing the needful as far as the regulation is concerned. As far as competition is concerned, yes, Amul and Patanjali are both very fierce competitors. But you know, the Nestle is standing in this in all the areas, whether it is dairy or whether it is chocolates or whether it is food products,
has been extremely strong in all these years. Please remember that in coming out of the crisis as a company, we have strengthened our innovation profile and our capabilities. We also have an R&D center in India, though it's a global R&D center, but we have the facility of it being utilized for Nestle India in projects that are useful for us. So there are numerous projects that are on in that R&D center and also in our own facilities and factories and development groups in order to come up with products, not just in the milk space, in the nutrition space, in the food space, in the chocolate space, and in the spices space. You will be happy to know that Masala Magic, which is one of our brand of spices, is one of the fastest growing brands in the marketplace today. And also that Maggi noodles itself is a big user of spices. So spices is an area of expertise for the company, and you will see more action in this happening. As far as mergers and acquisitions are concerned, I think, as I mentioned earlier to a shareholder, there are opportunities that will keep coming up. We evaluate these opportunities depending on the fit, depending on the size of the prize, and depending on the kind of financials that work out for this. And this is an area that will be under active consideration as we go forward. But needless to add, competition, as I mentioned earlier, it energizes us, it helps us to focus better, and that's really what we'll be doing as a company. But thank you, Mr. Manoj, for your confidence and for your support of the organization, and also of the stand that we are taking on various issues. Thank you very much. Thank you. Our next speaker member, Mr. Pramod Kumar Jain from Delhi, with client ID 100825531, had registered, however, has not connected. We will therefore move to our next speaker member. That's Mr. Dipankar Purkayastha from New Delhi, having client ID number 12047200009417188 to speak. Good afternoon. Can you hear me, please? Yes. I can hear you, Mr. Purkayastha. Okay. So thank you for the opportunity. I had sent in a list of questions in advance by email. So I would, for the benefit of other shareholders, just recap those questions, not necessarily in the same order as the mail. So the first set of questions is relating to CapEx. So with the commissioning of the Sanad factory, how much of your 26 billion investment plan is left to be implemented? Second thing is, I was a little disappointed that your annual report is quite silent on the proposal that has been submitted by Nestle under the government's PLI scheme, Production Linked Investment Scheme for Processed Fruits and Vegetables. So does this mean that this is going to be implemented by some other vehicle and not by Nestle India, and as far as the Nestle Group is concerned? And if Nestle India is going to implement this, can you share with the shareholders what is the proposed investment, estimated time frame for completion, the kind of business or products that this is going to do, the projected turnover in value and volume terms, and projected incremental profits? Why I ask this question is because you have filed submissions to the stock exchanges, informing the stock exchanges about this, but the annual report is silent on this. Third question on CapEx was that this year there has been an addition of 1824.8 million under the head buildings in right of use assets, note 5. Basically, these are leased buildings. So what is this additional leased building that have been taken? My next set of questions deals with your volume growth. I was very happy to see from the annual report that this year there has been a welcome increase in sales volume in 3 out of 4 categories. I mean, in comparison to the depressed trends that we saw in the last 2 years. So that is a good thing. But if I look at your milk products and nutrition category, the volumes at 134,669 MT are still below the 2018 figure, which was 137,066 MT. So what is the reason for this persistent lack of volume growth in this category? I mean, you can't blame this entirely on COVID, because babies were being born in COVID period also. And in fact, the anecdotal evidence is that there were more babies being born during COVID than non-COVID period. So if you can throw some light on this phenomenon.
And I would also request the company to consider disclosing the milk products and nutrition product figures separately so that we can understand where exactly the underperformance is happening. And the second issue is in the beverages category. While you have had volume growth this year, the volumes are still less than the 2018 figure. Now, in this category, I appreciate that it has been severely impacted by COVID because hotels, restaurants, catering were closed for large parts of the last 2 years. So, but do we have any sense of when we are going to finally leave COVID behind and move ahead? When are we going to get volumes above the 2018 figures? My third question is, about 2 years back, I had spoken to the CFO on the volatility and the adverse impact which this defined benefit pension scheme has on the P&L account of the company. And I was very, very happy to see that the board and the company have finally seized the courage or to end this scheme and relieve the shareholders from this burden. Only a few minor questions on this is that in the presentation which you all had made to the analysts this year, I think in February or somewhere, you had said that approximately 2/3 of the defined benefit pension liability has been covered under this future ready plan. So 2/3 means how many? Can you tell me how many 2/3 have been covered, and the 1/3 which has still left to be covered, what would be their number? And what is the reason why this 1/3 has still been left behind? And finally, on this pension scheme, typically the beneficiaries of these defined benefit pension schemes are people who are senior both in terms of age as well as hierarchy. So there is always entrenched resistance to doing away with these schemes. So just wanted to know whether this investment, one-time investment of 13,787 million in the insurance plan by the company, does this represent the full and final extinguishment of all pension liability towards these employees by Nestlé? Or is there some kind of backstop arrangement still there on account of inflation indexing with regard to the annuities payable by the insurance company? I know Nestlé has a very strong legal team and they would have vetted the arrangements, but just if you can give me that assurance that this is, finished, this whole chapter is now finally closed, at least for those 2/3 employees. Two questions I have are follow-up of questions which I had asked in the previous year's AGM. Last year I had asked the chairman on the feasibility or possibility of Nestlé setting up your own e-commerce portal. And the chairman had stated that the feasibility of a direct B2C business was being evaluated and that a decision would be taken soon. What is the status on this? Because as far as I can see, you still don't have a direct B2C business on the lines of the ITC Group's portal. And as so many shareholders have told you, visibility or awareness of Nestlé products, especially in the smaller tier 2 and 3 centers, is very poor. Wherein such a portal was, in my opinion at least, would have been very helpful the way ITC Group has been able to, leverage this portal. The other follow-up question to my last year's question was again is addressed to the CFO. Is the sharp increase in the amount payable to MSME creditors from 340 million to 1140 million? This question I had raised last year that there's been an exponential increase over the last few years, and the CFO had clarified that this was because of a redefinition of MSME by the government in July 2020, resulting in increased coverage. So this year, again, there has been an increase from 1140 million to 2,809 million, which is quite disproportionate to the general increase in the levels of creditors. So are you trying to telling me that this year also there has been a further redefinition of the MSME term by government? If not, what accounts for this huge increase? And this is, Nestlé is an outlier as far as this. I own shares in many other listed companies. I don't notice this phenomenon in any of the other listed companies. I find this peculiar phenomenon only in Nestlé. My next question is on this. There is a cryptic note in your annual report balance sheet on the sale of shares in Sahyadri Agro and Dairy Private Limited. So can you please tell us, for the benefit of the shareholders, why this investment was made in the first place? What is the rationale? And what are the circumstances which have changed that has necessitated the board to consider the divestment of this investment? If you could just give us some brief background of this whole story. One very interesting thing in your annual report was that the
usage of railways has gone up from 0.2% last year to 6.49% this year. Very welcome step because it's by far the cheapest mode of transport. So have you all worked out the impact on the bottom line of the increased usage of railways? And since now the dedicated freight corridors are going full steam ahead, so does the company have a medium-term goal in respect of railway usage? I mean, are you targeting a particular medium-term goal? And if so, what is it? Finally, I have two suggestions to make apart from these questions. One is in the category of chocolates. You know, with the increasing health consciousness and aversion to sugar, people are shifting to dark chocolates. And the biggest beneficiary of this trend has been Amul, not Cadbury or Mondelez. Amul has very nicely tapped this shift. Unfortunately, Nestle, as far as I can see, we don't have dark chocolates. And I'm worried that if we don't introduce this, fill up this gap, we'll soon see all the younger generation moving out from us as far as chocolates is concerned. The other suggestion I have is in your coffee range. You know, ITC Group has got a product called Dalgona coffee, which is marketed under the tagline "Feti Hui Coffee." You know, so in your Nescafe product range, you've got a wide range of products, but you don't have a Dalgona coffee. So I would suggest, because I find from the youngsters in my family that this is an enormously popular group. I'm on product with them. So you could also think of introducing this Feti Hui coffee or Dalgona coffee. I think that covers all my questions. Thank you for the time. Good day. Thank you, Mr. Purkaisa. Thank you very much for taking the trouble to really put down an exhaustive list of questions. I will try and, in the interest of time, to answer them as briefly and as clearly as possible, and also request my finance director, Mr. David McDaniel, to take some specific questions that might be a little bit more of accounting detail that you might like to know. So in the order, firstly, let me thank you for your suggestions on the dark chocolates and on the Dalgona coffee. Incidentally, one of the biggest beneficiaries of the Dalgona movement during the COVID was, in fact, Mr. Purkaisa, Nescafe. So far more than the benefit that anybody else has taken. One of the phenomenons that really helped us, because we used the recipe route of suggesting to how the consumers can create Dalgona coffee themselves, which is probably a more robust mechanism rather than trying to create technically slightly flimsy products, which might not be able to give a consistent taste experience. Nevertheless, I think it really reinforces the role that recipes and that lifestyles play as far as coffee is concerned. Dark chocolates, I think, point well made. We do have some, but very, very limited, and we probably will need to look at that more aggressively. Let me now start in reverse order of the questions that you had. Firstly, with your railway question. What has been the impact on the bottom line of the increased use of railways from 0.2% to 6.49%? Is there a medium long-term goal in respect of railway usage? There was an incremental impact on usage of railways by 70 million during the year 2021 from what we have transported. Impact was not material and is close to price neutral as we scale up volumes and collaborate closely with the railways. So this is really a ramping up that's happening. The medium-term goal ambition for usage of railways is 10% during 2022 and attempt to achieve 25% usage of railways for total primary movement by 2025. It helps us not only in terms of cost, as you know, Mr. Purkaisa, but more importantly in terms of the carbon footprint as well. The question that you had in the last 60-second AGM, in response to my question on the possibility of Nestlé setting up its own e-commerce portal for a B2C business, and also you talked about the MSME creditors. The MSME creditors, I will leave it to my colleague David McDaniel to take on. But as far as the B2C is concerned, I'm happy to inform you, Mr. Purkaisa, that we are in a fairly advanced stage of rolling out the B2C model. We are doing various amounts. You know, it has to be discriminating, it has to be compelling, and it has to be sustainable as a platform. So this is the work that has been done during the pandemic. And in fact, we are adapting the approach to be aligned with the evolving regulatory landscape because, as you know, these also have strong regulatory impacts on e-commerce. Our focus will be on delighting our consumer and
quite soon you will see the first pilot of it coming out. As far as the MSME question is concerned, David, would you like to take this? Yes, absolutely, I can. Thank you. Absolutely, I remember the question last year, and the answer is broadly similar. There are more MSME vendors registered with us now this year. So last year we had less than 800. Now we have approaching 1,300 vendors who have registered as MSMEs, not because the scope has changed, but because they have now made the registration. So they come into the bucket for that reporting. Also, our business has grown during the last 12 months, and we're doing some more business with those MSMEs as well. So saliency as well as quantity of them. And I said last year, and I can repeat it, we do never, sorry, bad English perhaps, we never pay people late. Okay, so we are absolutely committed to paying people on time, always, all of the people we work with, all of the suppliers we work with, and I can assure you that is the case. David, you might like to take the next question. What is the number of employees covered by the Future Ready plan in respect of the defined benefit pension scheme? Yeah, I can. We've covered 2/3 of the liability with the work that we did last year, the Future Ready plan, and 1/3 of the liability remains with those employees that we didn't progress with. In terms of quantum of people, around 2,000 people were covered under the first round, and about 4,000 people are left. We are talking about people with not always the longest of tenures, in fact, because our defined benefit program was closed to new entrants in 2013. So some of those people who joined just before that closure are 10 years in the company and still have some way to go. So there is a third of the liability left, and we are in active discussion as to how we will approach or how we will create a solution for that. But the amount of money invested with the insurance company for the tranche that was dealt with under Future Ready plan last year is absolutely frozen and fixed, and there is no further liability or obligation there. Maybe I could take the SADPL question. Now, what you could do is just cover off this, because Mr. Purka has had one more on the inflation indexing with regard to the investment that has been made. Is this full and final extinguishment, or do we have any further liability? No, as I just mentioned, that is a full and final settlement. The money that we've transferred to the insurance company is full and final for the Future Ready plan. There is no further obligation with regard to that 2/3 of the liability that was transitioned out. You can take the Sahyadri Agro one now. Okay, so we did have an investment in SADPL, Sahyadri Agro and Dairy Private Limited, for a number of years, pursuant to a business venture in the dairy industry. We had been looking actively for a disposal of that stake for quite some time, and that transaction was completed in February, and that is now off the books fully, and that chapter is closed. Let me take the question on the 26 billion investment plan, Mr. Pukaisa, that you asked about the capex. In 2020-21, major expansion projects completed, including the greenfield factory in Sanand, involving 4 noodle lines, a new KitKat molding line in Ponda, adding capacity of about 10,000 tons, and a new line for nutrition products in Samalkha. The total of this totals to about 9 billion. So out of 26 billion, 9 billion has been already spent. That leaves a balance of another 17 billion to take forward over the next 3 years. Coming to your question on the PLI scheme, Nestlé has been selected for the PLI scheme under the processed food, fruits and vegetable category, covering Maggi sauces, Maggi Masala Magic and Maggi cubes. The benefit will be available over 6 years, starting financial year 2021-22, subject to Nestlé making the committed investments and meeting the sales growth criteria. Nestlé will be completing the committed capex of rupees 50 crores in the approved categories, sauces, Masala Magic and cubes, by 31st March 2023 on its own in our own factories. So this is not going to be outsourced, Mr. Pukaisa. It's going to be done 100% by the company.
These investments will enable us to meet the sales growth criterion of 10% as per the PLI scheme. I hope this gives you an idea of the scheme and the impact. One final question for you, David, is on the right of use assets. During the year, there has been an addition of 1824.8 million under the head buildings in the right of use assets. Note 5, what is this on account of? Yes, this is on account of the new lease for our head office, which was put in place for a period of 9 years. That is the vast majority of the increased amount under this heading. Coming to your final question on the milk and nutrition volume evolution, thank you for the question. The milk products and nutrition segment, Mr. Purkaisa, contains a motley number of different products: dairy whitener, UHT milk, sweetened condensed milk, as well as our infant nutrition business. We agree that there is an importance of the infant nutrition business. However, I think one of the things I would respectfully disagree with you is on the so-called reviving the infant nutrition business. This is a strong market. We are strong market leaders in this category with the most advanced portfolio, and also we have made some very aggressive and strong entries into the toddler nutrition business, where our growths are significant and probably one of the amongst the fastest new products that we have launched in the market. During the COVID, there has been, of course, headwinds. While some couples may have decided to postpone starting a family, in fact, the real evidence is slightly contrary to the anecdotal evidence that you picked up, Mr. Purkaisa. Actually, birth rates have come down secularly because people have decided to postpone starting their families, and rightly so, because of either the medical related fears or indeed incomes, the other stresses that people have got. However, this is a category that is of considerable interest to us, and we are looking at, and some of it has actually done extremely well during the pandemic. So some parts of nutrition, some parts of milk have done well, but others have not done well. So in the overall total, it looks to you a little bit short on growth, but clearly it is an area of competitive advantage that we don't seek to give up in a hurry. On your coffee question, I think the main change is you answered it yourself. While the domestic retail business has actually grown by 26%, so it's a very strong growth that has happened in the domestic retail business. The out-of-home business, on the other hand, took a bad beating during this period because of COVID. Again, we are coming back. You'll be happy to know that we are today at almost 100% of what was the 2019 business. And I do hope that if nothing further happens on COVID as we move forward, this will be an area of secular growth for the company. So that's where we will be. So with that, Mr. Purkaisa, I hope I've done justice to the numerous questions that you've had. I want to really thank you for taking the trouble. You know, it is rare for a shareholder to delve into the annual report as detailed as you have, with very pointed, very piercing, and very intelligent questions. My compliments to you, and I do hope that you continue to have the interest in the organization the way you have shown in the meeting today. Thank you very much, Mr. Purkaisa. Thank you. I now invite our next speaker member, Mr. Jasmeet Singh from New Delhi, having client ID number 10987503 to speak. Yes, am I audible? Yes, sir. Yes, you are. Hello. Yeah, thank you. Thank you, Chairman. So it's been a long wait. The marathon meeting is coming to an end, and I will not hold you, the board, stay more on this call. Let me quickly read out. Actually, much of my queries have already been addressed. So let me come to the point where we left last year when we concluded the meeting, asking for the shareholders' opinion to conduct the meeting physically in the next year, which is this year. Now we are again connected on a virtual mode. I thought that this year we will be meeting in person. Nonetheless, hoping that next year around definitely we will be meeting in person.
whether say a good set of numbers on review, and kudos to the management leadership team and everybody who have worked hard to produce these set of numbers. I'm sure the new product launches last year, lined up this year and the coming years will keep us growing year on year. Chair, I have a couple of observations. If you recall, last year I requested your honor during the virtual meeting to consider putting up Maggi Ka Langar to serve humanity at some Gurdwara in south of Delhi, which you actually accepted and assured, but I didn't got any response from concerned team. I will be happy if you can look onto this. My second point is, while Maggi is our one of the top sellers, but there are concerns over its composition leading to the health concerns. Hope our R&D team is working hard to make it safe and safer for the young children. So I conclude by saying that I'm happy with the secretarial team interacting with the shareholders, leading by Gunjan Arya, Prashant, who are working close with us to address any of our concerns. With this, I confirm that I have voted, I and my group of couple of shareholders have voted in favor of all the resolutions, and all the best. Thank you very much. Thank you, Mr. Jaspreet Singh. My sincere gratitude to you. You've spoken the last time as well. It's a privilege and an honor to hear you again. My apologies for keeping you waiting. I think we do the due diligence of going through every question. I would like to answer them as best as I can, and unfortunately that means it takes a bit of time. But I do hope that you will indulge me the time that has been spent today. Regarding your request for setting up a Maggi point in a Gurdwara, I do recall this. Kindly be good enough to send the details to our secretarial department. I will certainly have our person to take a look at it as to what we can do. Why was it not done in the first place? There must be some good reason for it, and what we can do in order to help if there is anything that can be done in the matter. As far as making our products more nutrition is concerned, as you rightly said, Mr. Jasmeet, we have an R&D facility in India where there is active work on what we call ancient grains. So grains like millets, like ragi, like jawar, like oats, etc. And we will be coming up with products and initiatives that will enhance the nutritive content of our brands as well. So that is a continuous journey, and I thank you for your encouragement of that journey. Thank you very much. Thank you. I now invite our next speaker member, Mr. Karam Arora from Faridabad, having client ID 120-447-000-378-5696 to speak. Good afternoon, Chairman sir, Board of Directors and my fellow shareholders. सर बाकी तो सब चीज मेरे से पहले शेयर होल्डर्स ने बोल दी है, but I will stress on some certain issues. I will emphasize on some certain issues like declaration of bonus, sir. बोनस तो कम से कम आप डिक्लेयर करिए इस AGM के अंदर, नंबर 1. नंबर 2, सब शेयर होल्डर्स के बच्चों को कम से कम अपने जो है कंपनी विजिट्स तो जरूर कराइए. नंबर 3, जो सबसे बड़ी हमारी जो एक अचीवमेंट है कि हम आज बाबा की कंपनी से compete करने को तैयार बैठे हैं. अच्छा, उनसे हमारी क्वालिटी लेवल भी अच्छा है और रेट्स भी हमारे जो है वो नॉमिनल है. नंबर 4 जो है कि शेयर होल्डर्स की एक तो प्लांट विजिट्स जरूर कराइए. बच्चों के लिए जॉब्स के चांसेस भी सर ढूंढिए आप, जो कि आज के टाइम के अंदर मेन बेसिक नीड है हर पेरेंट्स की. बस ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि पहले टाइम बहुत हो चुका है. सो वेरी थैंक्स टू यू फॉर योर 63rd AGM meeting. Congratulations, sir, to you and your board of directors. Thank you. Thank you, Mr. Arora. Thank you very much. Thank you for your consideration of really keeping your question also very short and sweet.
your suggestion on a bonus is taken on board, and we will see what we can do about it. On factory visits, I want to make it clear, sir, that if any of you is traveling close to our factory and you would like to visit, please get in touch. I think it can be enabled. We don't organize for factory visits as such, because factories are also areas where there is a fair amount of concentrated work being done. But if somebody is traveling close by, gets in touch with us, I think a visit can be arranged. As far as competition is concerned, you're right. We are ready for competition. हम अपने, आपका नाम भी करम है सर, तो हम अपने कर्मों से जाने जाएंगे, हम हमारी बोली से नहीं जाने जाएंगे. तो हमारे कर्म में आप देखेंगे whether we are able to do the kind of things that we should be doing, and hopefully earn the trust and respect of not only you but also consumers. As regards jobs are concerned, I think your children are free to apply. This company is a meritocratic company. It's a merit-based company. I don't have, मेरी कोई पुश्तैनी नहीं है, मेरे कोई फादर या ब्रदर या कोई नहीं थे जो नेस्ले में बड़े पोजीशन में थे. मेहनत के साथ, लगान के साथ मैं जहाँ भी पहुंचा हूँ, और मेरे जितने भी लोग हैं वो भी इसी प्रकार से आगे बढ़ के आए हैं. But if they want to apply, they are most welcome, and certainly depending on the opportunity and depending on the merit, they will be given. Because एक चीज करम जी आप भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर हम सेकंड रेट लोगों को कहीं ले लें और रिजल्ट्स हमारे अच्छे ना हो, तो वही करम सिंह will be more critical at an AGM saying कि ये क्या कबाड़ा कर दिया आपने कंपनी का. So therefore that's also something that we would like to keep in mind. But with all due respects, thank you very much for your kind words, and thank you for your suggestions. Thank you. Thank you. I now invite our next speaker member, Mrs. Sushil Arora from Faridabad, having client ID number 120447000355337 to speak. Hello. Mrs. Sushil Arora. Hello. Yes, please proceed. हाँ जी, सुशील अरोड़ा जी बोल रही हूँ मैं सर. मैम, गुड आफ्टरनून चेयरमैन साहब एंड हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड हमारे शेयर होल्डर. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, क्योंकि बहुत ऑलरेडी लेट हो गए हैं. हमारी एक ही डिमांड है कि आप बोनस का डिक्लेयर करिए. बहुत टाइम हो गया आपने बोनस डिक्लेयर नहीं किया, तो आप बोनस या स्प्लिट दोनों में से एक चीज जरूर करिए. थैंक यू. Hello. Thank you, Sushil ji. Thank you very much for your question, and we will keep your suggestion in mind. सर सभी शेयर होल्डर्स की डिमांड है, सभी शेयर होल्डर्स की डिमांड है कि आप बोनस जरूर डिक्लेयर करें. इस पे विचार करें, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है आपने बोनस डिक्लेयर नहीं किया, तो हम चाहते हैं सभी को बेनिफिट मिले. प्लीज विचार करिए. इस पे जरूर विचार करेंगे मैडम. आपने कहा है और शेयर होल्डर्स ने भी कहा है, जरूर विचार करेंगे, और विचार और करने के बाद जो भी निर्णय हो डेफिनेटली आपको मालूम पड़ेगा, एंड यू विल कम टू नो ऑफ इट. थैंक यू वेरी मच. Thank you. I now invite our next speaker member, Mr. Subhash Chandra Wadhwa from New Delhi, with client ID number 100823349 had registered, however has not connected to the meeting. We will therefore move to our next speaker member, that's Chandra Shekhar from Delhi, client ID number 1201330000539287 to proceed. Am I audible, sir? Yes, you are. जी. नमस्कार माननीय महोदया जी, सुरेश नारायण जी. मीटिंग को 3 घंटे से ऊपर हो चुका है. बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आए, और जिस सादगी और अच्छे तरीके से आपने अंशधारियों का जो उत्तर दिए, बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है. मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी कंपनियां हम देखते हैं, मगर जो आपका जो तरीका है साथ साथ जवाब देने का और उसकी
उसको सेटिस्फाई करने का बहुत ही बेहतरीन है सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को कहने से पहले मैं कंपनी सेक्रेटरी का, उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमें वक्त पे ही ई नोटिस एनुअल रिपोर्ट दी भेजी है और जो भी अकाल रही है उसको दूर करने का भरपूर प्रयत्न किया है। पूर्व वक्ताओं में किसी ने बोला कि बी मुरली जी का नंबर नहीं होता, बी मुरली जी से मिलना बहुत कठिन होता है। मैं उनकी बात को काटता हूं क्योंकि मैं ये समझता हूं और ये मैं जानता हूं कि बी मुरली जी ने अपने स्टाफ को ही सबको बी मुरली बनाया हुआ है। हम जिससे भी मिलें, चाहे हम मिलें प्रशांत से मिले, मिस्टर राय से मिले, वो हमें वैसे ही जो बी मुरली जी का एक सिस्टम है, एक फिलॉसफी है कि हमें अंसारियों को हर तरह से मदद करनी है, वही चीज हमें नजर आती है। हमें लगता है कि बी मुरली जी ही हैं जो हमें उनके जरिए बात का जवाब दे रहे हैं। सर, आपने 1 अगस्त 2015 को इस कंपनी को के बोर्ड में आए हैं। 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में आपने प्रतिस्पर्धा, चुनौतियां बहुत देखी और उसको हर हाल में निभाते हुए कंपनी को एक अच्छी स्थिति में पहुंचाया। ना केवल स्थिति में पहुंचाया बल्कि कंपनी की ग्रोथ को, प्रॉफिटेबिलिटी को और कंपनी की डिविडेंड को भी आपने अच्छे से बरकरार रखा है। 200% 200 रुपीज डिविडेंड पर शेयर ये आपने गत वर्ष में दिया है, बहुत ही अच्छा है। चेयरमैन सर, अभी हम ये चर्चा कर रहे थे पतंजलि के योग गुरु और आज के शेयर मार्केट के गुरु स्वामी रामदेव। हमें किसी से कोई चिढ़ नहीं, किसी की कोई निंदा नहीं। हम विश्वास रखते हैं अपनी लकीर को बड़ी करने का, अपने ग्रोथ की लकीर को, अपने प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट्स हमने गत वर्ष में लेके आए हैं। हमारी कंपनी बहुत अच्छी एक कंपनी की अपनी स्ट्रेटजी है। हमें किसी का कंपटीशन में अपने आप को छोटा बड़ा ना करके अपनी लकीर को बड़ा करना है, अपने आप को अच्छे से आगे बढ़ाना है। हमें हमारे सामने आईटीसी भी है, कोरियन साहब की कंपनी अमूल, एक अपने कोरियन साहब अपने टाइम के बहुत बड़े माने गए हैं। अमूल भी जो आपकी लिस्टेड नहीं है मगर वो भी हमें कंपटीशन देती है, आईटीसी दे रही है और अन्य कई कंपनियां दे रही हैं। मगर हमारा R&D सेक्शन, मैं ये समझता हूं करते हुए आगे बढ़ रहा है। हाँ, हम किस चीजों में, जैसे कि कैडबरी की जो चॉकलेट है वो हमारे से शायद मार्केट शेयर ज्यादा होगा, मगर हमारा प्रयास भी और आगे बढ़ने का हो। आटा मैगी को लेकर भी हमारा जो मार्केट शेयर है वो कितना है सर? हमारा जो मार्केट शेयर अन्य जो कंपटीटर के साथ किस परसेंटेज पे है, मैं चाहूंगा सुरेश सर थोड़ा सा हमें इस ओर भी प्रकाश डालें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाले 3 साल में, यानी कि आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे 2025 में, सुरेश जी आप अपनी कंपनी को किस लेवल पर देखते हैं 2025 में? ये एक बड़ी चुनौती और एक बहुत बड़ा मकाम और बहुत बड़ा हमारा एक सपना कि 2025 में हमारी कंपनी किस विशाल रूप में खड़ी होगी, किस तरह से ताकतवर रूप, मसल पावर के साथ बढ़ेगी, उसकी रूपरेखा, ग्रोथ, उसका जो आपका रोड मैप है क्या रहेगा, वो हम जानना चाहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं पूरी टीम का कि कोविड के अंदर हमारी कंपनी ने समाज सेवा में अंडर CRS बहुत कुछ किया है।
ऑक्सीजन के प्लांट लगाए, जो कि तरह तरही मची हुई थी देश के अंदर। बहुत तबाही मची है। इस तबाही ने बहुत सारे बुद्धिजीवियों को, बहुत बड़े मैं देख रहा सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वकील हैं और बहुत बड़े लोग हैं जो कि इस तबाही में, इस मारामारी में टू वे की ये जो सेकंड वेव थी उसको निगल गई है। तो देश को बड़ी क्षति हुई है और हमारी कंपनी ने इस दिशा में हर संभव जो कदम किया है, मैं लूट करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ कि आपने दूरदृष्टा रखते हुए कंपनी को एक अच्छी कंट्रीब्यूशन कंपनी का जो दिया है समाज को, वो अद्वितीय है। और कंपनियों के एक सबक है कि इस तरह से कंपनियों को भी सारा काम सरकारें नहीं कर सकती, इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ना पड़ता है, पायलट को भी आगे बढ़ना पड़ता है देश को कुछ देने के लिए, देश की भलाई के लिए, चाहे वो CRS में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, वो हमारी कंपनी बखूबी निभाती है। मैं उसके लिए भी पूरे बोर्ड का और हर एम्प्लॉय का शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। उन्हें नंदन, अभिनंदन और चंदन उनके माथे पे चमकता रहे, खिलता रहे और हमारी कंपनी जिस खूबी से आगे बढ़ रही है वो ऐसे ही बढ़ती रहे। सर, आपका जन्म 19 मार्च जो कि निकल चुका है, और अगर हम इसका जोड़ देखें तो 29 होता है और 29 को जोड़े तो टोटल 11 बनता है और 11 का योग बड़ा ही शुभ होता है। और आप हमारी कंपनी के लिए बहुत बहुत शुभ रहे हैं। नेस्ले के लिए आप एक ताज रहे हैं और आपने कंपनी को बहुत आगे बढ़ाया है। मैं इन शब्दों के साथ कि आप जो चुनौतियां हमें आगे मिलेंगी, जो प्रतिस्पर्धा में हम और बहुत कुछ देखेंगे। अभी हमारे सामने हमने देखा कि रशियन वार हो रहा है, यूक्रेन के साथ महंगाई भी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं, हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी असर पड़ेगा। कई चुनौतियां हमें देखने को मिल रही हैं। उस संबंध में मैं ये समझता हूँ कि आप बेखूबी से आगे इसको कंपनी को देखते हुए आगे बढ़ाएंगे। हमारा R&D सेक्शन बहुत आगे बढ़ेगा। हमने कैपेक्स में बहुत काम किया है। हम 100 प्रोडक्ट अभी लाए हैं, आने वाले समय में और प्रोडक्ट भी लाएंगे। कंपनी की जो पोजीशन है QCDD में, पैरामीटर में बहुत अव्वल रहेगी। 24% हम महिलाएं हमारे कंपनी में सुयोजित हैं। बहुत अच्छे से हमारी कंपनी जो है कर रही है और इस दिशा में हमारी कंपनी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं। और चेयरमैन सर, आपने जिस तरह से मीटिंग को चलाया है और आप संचालन कर रहे हैं और हमारे सभी भागीदारियों का उनका पूरे तरीके से जवाब दे रहे हैं, मैं वाकई आपको नतमस्तक होता हुआ नमन करता हुआ आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बी मुरली जी को, उनकी टीम को, सभी डायरेक्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद चंद्रशेखर जी। आपके बातों को सुन के मुझे कबीर का एक दोहा याद आता है। कबीर ने कभी कहा था कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। आपने जो शब्द जो कहे हैं वो न केवल आपको शीतल कर रहा है, मुझे भी बहुत शीतल कर रहा है और मेरी पूरी टीम जो है उनको भी बहुत शीतल कर रहा है। काश कई लोग इस दुनिया में अगर ऐसे वाक्य बोलते रहे तो दुनिया और क्या क्या नहीं कर सकती। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने कंपनी के परफॉर्मेंस पे, कंपनी के चैलेंजेस पे, कंपनी के जो आउटलुक पे आपने बहुत ही अपने अच्छे विचार और बहुत ही पॉइंटेड ऑब्जर्वेशंस आपने दिए हैं। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं आपका। मेरी इच्छा यही होगी कि हाँ, 2025 में मेरे 10 साल हो जाएंगे। मेरी यही इच्छा होगी कि जब इस कंपनी का मुझे कारोबार संभालने को तो दिया था तो 8-9 हजार करोड़ का कंपनी था, अभी पहुंच गए हैं 15-16 हजार करोड़ की कंपनी में। इच्छा यही होगी कि न केवल हम और भी बड़े कंपनी हो, लेकिन और भी इज्जतमंद कंपनी हो, और भी वफादार कंपनी हो और समाज के तौर पे और भी बहुमूल्य कंपनी हो। एक जरिए, एक दर्जे के आगे टर्नओवर और प्रॉफिट्स ये सब तो आती रहती हैं, लेकिन भरोसा, मोहब्बत और
जो समाज की तौर पे जो वफादारी हम दिखा सकते हैं और निभा सकते हैं, वो इनसे बहुत ही बहुमूल्य है। और यही मेरी चाहत होगी। आगे चुनौतियां कई हैं, जैसे आपने कहा ये वार जो हो रही है इसके कारण इन्फ्लेशन पे और हमारे ओवरऑल कॉस्ट इंडिकेटर्स में काफ़ी चोट पहुंचा रही है। लेकिन इतना ही कहूंगा आपसे कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जुटकर, आपने, मैंने, हमारे टीम ने और हमारे सहयोगन ने जुटकर इस कंपनी को इतना आगे बढ़ाया है, इसी तरह हमारी परफॉर्मेंस और हमारी प्लान्स जो है कंपटीशन की और कई प्रकार के जो चुनौतियां आएंगी उसके तरफ रहेंगी। तो इतना ही मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच चंद्रशेखर जी फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स। गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you, Mr. Shekhar. With that, we have completed all the speakers. Thanks to all the speakers participating from across the country for their comments and questions. We have tried our best to answer the questions raised by all the speakers. Next, the questions sent in advance by email. I would just like to request, if it is not a problem, I will just take a 2-minute comfort break and please come back and resume the proceedings. With your permission, please. So, Inba, if you can just give me a 2-minute break, I'll just come back and we can start the proceedings on the next set of questions. Thank you.
Thank you very much, ladies and gentlemen, for your patience. I'm very happy that we've been able to answer all your questions as best as we can. Next, the questions sent in advance by email. I would like to thank the esteemed members who have sent their questions in advance to the designated investor email of the company. If I were to start with the first question, email from Mr. Nitin Nerlekar and Meera Nerlekar, IN 300829113511982 and 10018844. Nestlé would spend 2,600 crores on capex to expand the manufacturing capacity under various categories. Would it be possible to quantify the amount earmarked for infant nutrition and formula to be specific? What has been the historical growth rate in infant formula, and has COVID resulted in muted growth in this category? Based on the published volume data in the annual accounts over the last several years, it appears that only pricing has resulted in incremental revenues, with volumes in fact showing a negative growth. In fact, nutrition, which accounts for more than 45% of the revenues, is putting pressure on the overall growth of the business. What kind of strategy is proposed to revive the nutrition business? Thank you very much for the question. The milks and nutrition products segment, as I had answered earlier, Mr. Prukayastha as well, one of our esteemed shareholders, is a motley group of different products consisting of dairy whiteners, UHT milk, sweetened condensed milk, etc., as well as our own infant nutrition business. I agree with you, recognizing the importance of the infant nutrition business. However, where I'd like to respectfully disagree is on the point of reviving the infant nutrition business. We are strong market leaders in infant nutrition with the most advanced portfolio in the category, and have also made a strong entry into the toddler nutrition category, where we have enjoyed some very encouraging growth. During COVID, like all other categories, this business also had its share of headwinds and tailwinds. While some couples may have decided to postpone starting a family due to the pandemic, or many hospitals were focused on providing COVID care, at the same time, people focused on making healthier food choices, including for their infants, in consultation with their doctors, if breastfeeding was not possible. The business has had a strong trajectory after the second wave, including gaining market share. On your question of investment, I'd like to reassure you that this business has never suffered in this area, particularly on upgrading quality norms or enabling product innovation, and that really is the strategy, which was the last part of the question. Leadership in science, leadership in technology and quality, and leadership in compliance. The second question which has come is that there has been a lot of talk with regard to new product introductions across categories. Could you please highlight the broad progress on this? I'm not seeing any significant thrust, especially on the breakfast cereal category, which Nestlé was upbeat some time back. The response: at Nestlé, we constantly explore to contribute to a healthier future with good food for our consumers, and aim to have a portfolio of products for all generations. All new product innovations are driven by this guiding principle, and we remain open to opportunities that may arise in times to come. In the last couple of years, we have launched almost 60 innovations in the last 3 years. For example, Maggi Nutrilicious Atta, spinach noodles, Munch nuts, under out of home Nestea instant green tea, instant hot and soluble green tea. We continuously look at our portfolio in terms of focusing on the core as well as new products depending on the opportunities. Breakfast cereals continues to be an area of focus and a source of future growth for the company. We've launched Nestlé Gold corn and oat flakes with a distinct differentiation versus cornflakes, and also continued our investments behind our kids offering Cocoa Crunch. We also launched Cocoa Crunch cookie cereal, a first of its kind cereal with the taste profile of a cookie. Right now, we are focusing our investments in a few select geographies in order to gain share in the category, which is a very competitive category. The third question is, what are the plans with regard to coffee and chocolates for driving volumes as also new introductions? Company continues to grow in coffee. As I mentioned earlier, the growths have been very strong, have been consistent, and have been built on the Nescafe platform. Nescafe has recorded another year of double-digit growth, led by Nescafe Classic, based on significant growth in household penetration and increase in market shares. Nescafe continues its thrust in innovation and renovation, and as I had mentioned earlier, have launched a Nescafe All-in-One, a convenient coffee premix
affordably priced at rupees 10. Nescafe Black Roast, an intense cup for strong coffee lovers, and a renovated recipe of Nescafe Sunrise has also been put out into the market, especially in the south, which has gained good traction. Nescafe is also accelerating premiumization, building on the promise of delivering coffee at its best with Nescafe Gold. Chocolates is a growing category. High double-digit growth is what we have witnessed. Our leading brands Kit Kat, Munch, and Milky Bar are growing from strength to strength. Our solid execution in the market, supported by media campaigns both on TV and digital, festive interventions, attractive consumer promotions are helping in driving the volumes. We have recently launched Kit Kat Mango and Kit Kat Mixed Fruit in January 2022, which has received a very positive response from the consumer. Going forward in the year, we have more plans to launch exciting new products for our consumers. That completes the question that had been asked earlier. I now come to an email from Mr. Sudhanshu Kela, DPID 3022902, client ID 400855159. First question, significant decline in 2021 net profits and closing positions of cash and cash equivalents. Second, unfunded defined benefits pension planned by NIL with underlying risks. And third question, deferred tax assets and claim under the income tax. Since the questions are of a detailed nature, I would request my colleague, Mr. David McDaniel, to kindly answer as succinctly as possible the three questions that have been posed. Thank you, Suresh, and thank you, Mr. Sudhanshu, for your questions. Your questions do revolve around the defined benefit pension plan and the transition into the Future Ready plan, which we did last year, and covers various aspects around cost determination, decline in profits, reduction in cash investments with the insurance company, compliances and governance processes. So let me respond to all of that. Nestlé is not an expert in management. We are an expert in sustaining successful brands and delighting consumers with food and beverage solutions. So in the current scheme of things, the DB plan was unfunded and did not give any flexibility or portability to our employees. We looked at this situation over a period of time, and over a period of time, different solutions have become available in the market to manage post-retirement benefits in a more professional and expert manner. So we evaluated options, and we went to specific partners to do so, very carefully running through evaluation processes at each stage to make sure that we were making the right decisions, taking our board and relevant stakeholders through these proposals. And we've undertaken a transition to provide a very secure benefits going forward to our people, that the benefits that have portability, have safety, have flexibility, features that modern post-retirement benefit schemes should have and now do have. So this is a change management. We've embarked upon this as a journey. We have transitioned or worked on 2/3 of our liability, as we've made clear in the note in our corporate report. We are very comfortable with the governance process that we've been through, and we're very comfortable that the decision we've made is to the benefit of employees and in fact all stakeholders. I believe I have covered most of your questions. Thank you. Thank you. We come to the end of the email questions. Now for the messages posted on the communication box, I wish to thank the members who have posted these messages. Mr. Pramod Rai, may I now request you to kindly spell out the questions and messages, if any, received on the communication box one by one. Thank you, Chairman. There are few questions and also few comments. Some of the questions have already been answered. Take liberty to take up those questions and comments not answered or taken so far. Mr. Priyadarshan Mehrotra from Sitapur conveys their wishes to Nestlé team for their success story, not just as an investor, but as an emotionally bonded business partner for last 55 years, and also for providing best returns to their shareholders. Also, they would like to know what is the plan for the company to bring out split of shares. Second question is from Mr. Gaurav Kumar Singh, who wishes to know the future plans of the company to come up with the rights issue in future.
Third question is from Mohideen Ghani, who wished to update on the product launches for the upcoming 1 to 2 years. Also, he wished to know the plans of the company to manage the raw material cost increases in the recent months. And lastly, there is a question from Ms. Ritu Kanoi, who wished to know the status of scheme of arrangement for reclassification of rupees 837 crore standing to the credit of general reserves to the retained earnings. Thank you, sir. These concludes all the questions which has been received on communication box. Thank you, Mr. Rai for the questions. Firstly, I would like to thank Mr. Priyadarshan Mehrotra and others for their compliments to the company and for the steadfast relationship over the last 5 decades that they have had with us. I'm really gratified and proud of this relationship that makes us strong. There are suggestions regarding the splitting of shares and the bonus. Again, as I've responded earlier, are suggestions that we will take on board and see how best we can respond over a period of time. As far as the question from Mr. Mohideen Ghani is concerned on NPDs, I would like to inform him that in the last 5 years, almost 100 new products have been introduced by the company, contributing to about 5% of our sales. As I speak to you, Mr. Ghani, there are almost 20-25 projects that are on the anvil. Innovation renovation will continue to be a key part of the acceleration project for the brand in terms of both getting in new consumers, whetting the appetite of existing consumers, and also broadening the horizons of the engagement of Nestlé India with the consumers in the market. So this will be something that will be a fairly aggressive platform that will be done, and I look forward to this process with all excitement in the future as well. Coming to the question that has been posed by Ritu Kanoi, may I again request Mr. David McDaniel to quickly summarize where we are on the classification of the general reserves project that we are on. Yes, thank you, Suresh, and thank you for the question. Yes, last year we started a project to transfer the entire balance of 8,374 million from general reserves to retained earnings. This scheme of arrangement has been submitted. So far, we have a no adverse observation finding from the SEBI, Securities and Exchange Board of India. Now we go to NCLT, and the first hearing has been taken upon this matter on the 8th of April, and the order on the motion has been reserved by the NCLT. So we are progressing according to plan. We expected this project to take 12 to 18 months, and we do hope to conclude on this matter in this year. Thank you. Thank you, David. Thank you very much, and thank you, Mr. Rai, for having summarized the questions and the observations. We have tried to answer them as best as is possible in the situation. If any of your questions has not been answered, please write to the designated investor email of the company, investor, investor, @in.nestle.com, and we shall respond to you at the earliest. I now come for the voting on the agenda items. Now for the voting on the agenda items 1 to 6 as set out in the notice of the AGM. As explained earlier, members present at the AGM but who have not cast their votes by availing the remote e-voting facility can exercise their vote in proportion to their shareholding through through electronic voting platform provided by NSDL, the icon of which is available on the top of your screen. You will be redirected to the e-voting portal of NSDL. Mr. Abhinav Khosla, partner Messrs. SCV and Company LLP, Chartered Accountants, will scrutinize the votes cast through remote e-voting and votes cast during the AGM on e-voting platform as provided by NSDL. Mr. Khosla will submit the report thereon to me as the chairman in the prescribed manner not later than 2 p.m. tomorrow. The voting results on all the resolutions placed before the AGM would be declared not later than around 6 p.m. tomorrow and shall be immediately intimated to the Bombay Stock Exchange.
The results, along with the report of the scrutinizer, shall be uploaded on the websites of the company and the NSDL and shall be also available at the registered office of the company. I now wish to draw the attention of all the members participating in the AGM that the e-voting platform provided by NSDL will remain open for another 30 minutes. I thank you all for your participation and for your valuable suggestions and comments, which I assure you will receive due consideration of the management. The proceedings of the meeting will close after all the members participating in the meeting have cast their vote through e-voting, which will lapse after 30 minutes. May I once again take the opportunity of thanking every speaker today, every member, every shareholder who has been present, those who have asked questions on email, those who have asked and made comments to the communication box, for your active interest and engagement in the fortunes of your company, Nestlé India. It is such engagement, such interest, such confidence and such trust that inspires me and my team and also our board of directors to take forward the business of this company to greater heights. Thank you all very much and best of luck to all of you. Keep safe and keep smiling. Thank you very much.
Dear members, as instructed by the scrutinizers, request all the members participating in the AGM and who have not cast their vote to cast their vote in the remaining period of 10 minutes. Thank you.
Dear members, as advised by the scrutinizers, the time for e-voting has elapsed and they are of the opinion that all members who are participating in the annual general meeting have been given adequate time and opportunity to vote at the AGM. And this concludes the voting process of AGM. I hand it back to the chairman. Have been adequate to cast their votes. I now formally declare the meeting being closed. I thank each one of you for your questions. Good luck, and stay smiling. Thank you all very much. Have a great day. Thank you.